And eventually, listen to me, eventually when the time quantum become very large, bully, when the time quantum become very large, then round robin works like dash. Round robin degenerates to work like FCFS. इसका एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड करेंगे. I have three processes, please understand. Arrival time, burst time, 1 2 3 4, four processes. Arrival times are 0 1 1 2, something like this. Burst time has some 4 5 3 6. Now for this data set, if I take time quantum is equal to 10, much higher than the largest burst time. जब आप इसका गैंट चार्ट बनाओ, when you prepare the Gantt chart for this data set, क्या होगा? फर्स्ट P1 रन करेगा 0 पर, टाइम क्वांटम 10, बस टाइम 4 पे कंप्लीट हो जाएगा. फिर बाय दिस टाइम रिमेनिंग प्रोसेस है, उसके बाद कौन रन करेगा? P2 रन करेगा 5 यूनिट्स 9, उसके बाद P3 रन करेगा 3 यूनिट्स 12, उसके बाद P4 रन करेगा 6 16, सॉरी 12 प्लस 6 18. Is it not? This is nothing but FCFS, pure FCFS. So when time quanta become very large, it works like FCFS, which is not at all a good responsive system. FCFS is not a good responsive system. Correct? And when the quantum become very small, when the quantum become very small, then what will happen to round robin? अगर बहुत छोटा होगा वैल्यू क्वांटम की, तो क्या होगा? राउंड रॉबिन के लिए क्या प्रॉब्लम होगा? Like for example, यही डेटा सेट के लिए we will take like this. Let us say the time quantum is equal to 0.1, very small value, and scheduling overhead delta is 2. Prepare the Gantt chart. And see the behavior. CPU 0, delta 2. P1 has the first one to come. It runs for 0.1, 2.1. Then it will go back delta 4.1. P2 will run for 0.1, 4.2 preempt, delta 6.3. P3 will run for 0.1, 6.4, delta 8.4. Correct? 8.4. And then I will have P4 running 8.5. यहाँ पर गलती किया मैं, वही देख रहा था मैं ऐसा क्यों हो रहा है. 6.2 है ये, and this is 6.3. This is 8.3. 8.4. Is it okay? One round is over. I have completed one round. During this time of delta t, the CPU, बोलिएगा, CPU was busy or idle? How was CPU utilized? Busy or idle? CPU was busy, doing two kinds of activities: useful work and efficient and overhead work. Useful and overhead. These overhead. So what is percentage of CPU utilization during that schedule length delta t? Percentage CPU utilization. Utilization matlab efficiency. During 8.4, CPU was doing useful work here and here and here and here. Kitna? 0.4 by 8.4. 4 by 84. 1 by nearly 21. 1 by 20 आप लो, कितना होगा 1 by 20? 0.05, 5%. 5%. Almost 5%. And what is the overhead? Percentage CPU overhead during delta t. Overhead during delta t.
95%. मतलब आपकी efficiency is nearing to zero. 5% is closer to zero. 90%, 95% is closer to 100. Most of the time you'll be doing only overhead activity, remaining work not useful. Matlab, when the time quantum become very small, efficiency of the system or efficiency of the processor nearly tends to become nearly to zero, nearing to zero. So based on this, we say that the time quantum should neither be too small nor too large. It should neither be too small nor too large. If it is too large, FCFS. If it is too small, efficiency drops nearing to zero. You cannot calculate like optimal value. There is nothing like optimal value. There is no formula for it. चलिए अब some questions लेंगे round robin के ऊपर. First question here. Very simple. Give me the answer fast. Zero process in the order A, then B. Plus का मतलब है when you just start zero. Zero plus, generally students get confused with zero plus. Zero plus का मतलब एक counter रहता है zero. Plus का मतलब है when you just start zero. मतलब just start zero. Immediately after zero. So at zero we have process in the order A, then B, then C, then D. Time quantum is equal to 1 unit. ये 1 unit का है. तो फर्स्ट राउंड में देखिएगा ए बी सी डी कंप्लीटेड. तो रेडी क्यू में आपके पास कौन होंगे? सिर्फ ए और बी होंगे. दे विल ऑल्टरनेट ए बी, देन अगेन ए, देन बी, देन अगेन ए. ए का 4 यूनिट्स है. 1 2 3 4, दैट्स इट. सो देयरफॉर 5 6 7 8 9, दैट्स इट. कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस ए इज 9. बहुत सिंपल है.
was asked. The same way here, completion time of the process. Prakhar is asking something. देखिएगा ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस ए का बर्स्ट टाइम है, ये बी का है, ये सी का है या डी का है? अच्छा यहां पर ए बी लिखा मैं, ठीक है, ए सी होना चाहिए ना, तो कंप्लीटेड विल बी बी एंड डी, बी एंड डी, तो ए एंड सी रहेंगे, सी है, ये सी है, नो प्रॉब्लम, टाइम वही रहेगा। ट्रिपल स्टार PYQ, read it. Come on, I want everybody to have a look here. Let's understand this question. Consider a system with n processes. For example, if I take 5 processes, arriving at time 0, मतलब सारे के सारे processes ready queue में हैं, P1, P2, P5. The CPU and substantially large burst times. CPU scheduling overhead is S, delta is S, time quantum is Q. Using round robin scheduling, what must be the value of this quantum Q? इसकी value क्या होना चाहिए? Such that each process is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after t seconds in its subsequent run on CPU. अगर आपकी इंग्लिश कमजोर हो, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता हो, तो क्वेश्चन समझने ही में प्रॉब्लम हो जाएगी। इन इट्स सब्सीक्वेंट रन ऑन सीपीयू का मतलब क्या है, उसके लिए हम शेड्यूलिंग करके अंडरस्टैंड करेंगे। देखिएगा, आई हैव 5 प्रोसेसेस एट टाइम 0, हम डेल्टा होगा पहले, डेल्टा एस, ठीक है। कौन रन करेगा? P1, कितने टाइम के लिए? क्वांटम Q, जिसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, मतलब दिस वैल्यू इज S प्लस Q, ये ड्यूरेशन Q है। यहां P1 प्रीएम्प्ट होगा, प्रीएम्प्ट होकर कहां जाएगा? रेडी क्यू में जाएगा P5 के बाद। हम ये कह रहे हैं कि ये क्वांटम की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए ताकि P1 should get a chance to run on the CPU again in its subsequent run। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी P1 रन करेगा, कितने टाइम के बाद रन करना चाहिए एग्जैक्टली? लुक एट दिस, each process मतलब P1 is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after t second in its subsequent run। subsequent run के लिए अगर आप यहां पर लगाओ आप P1 should get a chance later, मतलब P1 के प्रीएम्प्ट होने और फिर से चांस मिलने के लिए ये जो ड्यूरेशन है, दिस शुड बी एग्जैक्टली t। P1 के प्रीएम्प्ट होने से till it gets a chance to run on CPU again, it should be t। Read the statement. What must be the value of quantum Q? Each process मतलब P1 is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after t second in its subsequent run। subsequent run के लिए अगर आप यहां पर लगाओ आप P1 should get a chance later, मतलब P1 के प्रीएम्प्ट होने और फिर से
चांस मिलने के लिए ये जो ड्यूरेशन है दिस शुड बी एग्जैक्टली टी। P1 के प्रीएम्प्ट होने से till it gets a chance to run on CPU again, it should be T. Read the statement. What must be the value of quantum Q such that each process, P1 लीजिए each process, is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after T seconds. ये डायग्राम क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है डायग्राम? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मतलब आप जब क्वांटम को वेरी करोगे तो ये कंडीशन वेरी हो सकता है। तो मतलब ये टाइम में फ्रॉम हियर टू हियर हमें कितने प्रोसेसेस शेड्यूल करना है? बाकी के 4 प्रोसेसेस शेड्यूल करना है। 4 P2 P1 P1 के प्रीएम्प्ट होने और फिर से चांस मिलने के लिए ये जो ड्यूरेशन है दिस शुड बी एग्जैक्टली T। P1 के प्रीएम्प्ट होने से till it gets a chance to run on CPU again, it should be T. Read the statement. What must be the value of quantum Q such that each process, P1 लीजिए each process, is guaranteed to get its turn at the CPU exactly after T seconds. ये डायग्राम क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है डायग्राम? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मतलब आप जब क्वांटम को वेरी करोगे तो ये कंडीशन वेरी हो सकता है। तो मतलब ये टाइम में फ्रॉम हियर टू हियर हमें कितने प्रोसेसेस शेड्यूल करना है? बाकी के 4 प्रोसेसेस शेड्यूल करना है। 4 P2 टू P5। कैसे शेड्यूल करेंगे? फर्स्ट आई विल हैव डेल्टा S, फिर P2 रन करेगा क्वांटम Q के लिए, फिर अगेन डेल्टा S, P3 रन करेगा क्वांटम के लिए, फिर डेल्टा S, P4 रन करेगा क्वांटम के लिए, फिर डेल्टा S, P5 रन करेगा अपना क्वांटम के लिए, देन डेल्टा S, फिर P1 को यहां पर चांस मिला रन करने के लिए। P1 got the chance exactly after T। तो मतलब आप गौर करो यहां पर कि जैसा अगर आप क्वांटम की वैल्यू एग्जैक्टली ये लोगे जितना भी हम यहां पे लिए हैं अभी जो हमें मालूम करना है, देन P1 विल गेट एग्जैक्टली आफ्टर T। अगर क्वांटम की वैल्यू अगर आप कम कर दोगे, कम करोगे, तो P1 विल गेट अ चांस बिफोर T अभी जो हमें मालूम करना है, देन P1 विल गेट। तो मतलब आप गौर करो यहां पर कि जैसा अगर आप क्वांटम की वैल्यू एग्जैक्टली ये लोगे जितना भी हम यहां पे लिए हैं अभी जो हमें मालूम करना है, देन P1 विल गेट एग्जैक्टली आफ्टर T। अगर क्वांटम की वैल्यू अगर आप कम कर दोगे, कम करोगे, तो P1 विल गेट अ चांस बिफोर T। समझ रहे हो बात को? बिफोर T ही P1 को चांस मिल जाएगा। अगर P क्वांटम की वैल्यू ये वैल्यू से अगर बढ़ा दोगे आप, तो P1 विल गेट अ चांस लेटर टू P, लेटर टू T के बाद मिलेगा चांस। एग्जैक्टली ये कंडीशन। तो अब यहां से हमें क्वांटम की वैल्यू डिटरमिन करना है इन टर्म्स ऑफ S, इन टर्म्स ऑफ T, इन टर्म्स ऑफ N, इन टर्म्स ऑफ N। तो बेटा यहां पर देखिएगा ये ड्यूरेशन है T, ये ड्यूरेशन T में वी हैव क्वांटम्स एंड आल्सो शेड्यूलिंग ओवरहेड्स। कितने शेड्यूलिंग ओवरहेड्स है? कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5। ये ड्यूरेशन में 5 शेड्यूलिंग ओवरहेड्स है, मतलब इन जनरल n शेड्यूलिंग ओवरहेड्स रहेंगे। तो मतलब कितना टाइम हम शेड्यूलिंग ओवरहेड में कंप्यूट कर रहे हैं? 5 इंटू 1, 5 इंटू एस, मतलब n इंटू एस। तो शेड्यूलिंग ओवरहेड टाइम कितना बना? n इंटू एस। ठीक है ना? शेड्यूलिंग ओवरहेड का टाइम कितना बना टोटल? n इंटू एस। 5 शेड्यूलिंग ओवरहेड्स है, मतलब इन जनरल n शेड्यूलिंग ओवरहेड्स रहेंगे। तो मतलब कितना टाइम हम शेड्यूलिंग ओवरहेड में कंप्यूट कर रहे हैं? 5 इंटू 1, 5 इंटू एस, मतलब n इंटू एस। तो शेड्यूलिंग ओवरहेड टाइम कितना बना? n इंटू एस। ठीक है ना? शेड्यूलिंग ओवरहेड का टाइम कितना बना टोटल? n इंटू एस। तो फ्रॉम द टाइम t, ड्यूरेशन t, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ओवरहेड टाइम ns,
ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम योर कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटेशनल टाइम बनेगा, टी माइनस एन एस आपका कंप्यूटेशनल टाइम बनेगा। समझ रहे हो, किसका कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटेशनल टाइम ऑफ P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये सारे चार प्रोसेसेस का कंप्यूटेशनल टाइम है टी माइनस एन एस। मतलब ये टी माइनस एन एस हम इक्वली शेयर कर रहे हैं अमंग हाउ मेनी प्रोसेसेस, अमंग 4 प्रोसेसेस। फिर से कह रहा हूं, टी माइनस एन एस जो ड्यूरेशन है दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये हम इक्वली शेयर कर रहे हैं एज वैल्यू Q अमंग हाउ मेनी प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस। मतलब in general this should be equal to n minus 1 4 into value Q, this should be the inequality। बोलिए, T minus Ns should be equal to n minus 1 into Q, everybody agree to this? Come on, मतलब in that is nothing but time of P2 plus P3 plus P4 plus P5, ये हम इक्वली शेयर कर रहे हैं एज वैल्यू Q अमंग हाउ मेनी प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस। मतलब इन जनरल दिस शुड बी इक्वल टू n minus 1 4 into value Q, this should be the inequality। बोलिए, T minus Ns should be equal to n minus 1 into Q, everybody agree to this? Come on, perfectly। T minus Ns is the computation time of 4 processes, 4 processes, मतलब n minus 1 processes, which is shared equally among Q, n minus 1 process. So therefore, logically, this should be equal to n minus 1 into Q. Hence, therefore, Q is equal to T minus Ns by n minus 1। ये है आपका आंसर, ये आंसर है। फिर से गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा गौर कीजिएगा, दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप एक सैंपल डेटा लेकर अंडरस्टैंड करना, जनरलाइज करना। नो, P1 get its chance such that each process get its turn at the CPU। देखिए at the CPU है, here at delta it didn't get the CPU, CPU यहां पर मिला उसे। ठीक है, इज इट ओके? अब ये क्वेश्चन में अपने और कंडीशन में ऐड करूंगा, अपने और कंडीशंस ऐड करूंगा। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। Come on, other people also, please let me know. Girls. Okay, Nina, right. So now I will ask another question. Please see here on board. I will write it like this. I will write it like this. I will write it like this. If Q is equal to T minus Ns by n minus 1, जो अभी हमने derive किया, then each process
question. Please see here on board. I will write it like this. I will write it like this. I will write it like this. If Q is equal to T minus Ns by N minus 1 जो अभी हमने derive किया, then each process is guaranteed to get onto CPU exactly after t seconds. ये है condition. Second point I am writing, look at this. If Q is less than T minus Ns by N minus 1, if it is less than, then क्या होगा? जब बोलिए आप each process, अब क्या बोलेंगे आप? Then each process के बारे में क्या बोलेंगे? अगर लेस देन टी माइनस एन एस बाई एन माइनस वन हो, क्वांटम डायग्राम से एनालाइज कीजिए, अगर क्वांटम की वैल्यू इससे कम हो गई, क्यू बाई टू हो गई, कम हो गई, तो मतलब ईच प्रोसेस को कितने बार चांस मिलेगा? विद इन ड्यूरेशन टी कितने बार चांस मिलेगा? एक बार मिलेगा या मल्टीपल मोर देन वन टाइम मिलेगा? मोर देन वन टाइम मिलेगा, एटलीस्ट वंस मिलेगा। पढ़ लेना मादर चोद, क्या बोलेंगे आप? देन ईच Q is less than T minus Ns by N minus 1. If it is less than, then क्या होगा? जब बोलिए आप each process, अब क्या बोलेंगे आप? Then each process के बारे में क्या बोलेंगे? अगर less than T minus Ns by N minus 1 हो, क्वांटम डायग्राम से एनालाइज कीजिए, अगर क्वांटम की वैल्यू इससे कम हो गई, Q by 2 हो गई, कम हो गई, तो मतलब each प्रोसेस को कितने बार चांस मिलेगा? विद इन ड्यूरेशन T कितने बार चांस मिलेगा? एक बार मिलेगा या मल्टीपल मोर देन वन टाइम मिलेगा? मोर देन वन टाइम मिलेगा, एटलीस्ट वंस मिलेगा, मोर देन वन टाइम मिलेगा ना? हाँ, इट विल डिपेंड कितना आप रिड्यूस कर रहे हो क्यू को. सो देयरफॉर हम बोलेंगे देन ईच प्रोसेस विल गेट अ चांस टू रन ऑन सीपीयू at least once. मैं इसको अगर इक्वल टू भी अगर डालूं तो एटलीस्ट वंस, वन और मोर देन वन टाइम, एटलीस्ट वंस विद इन टी. क्लियर है? एटलीस्ट वंस. If it is equal, exactly once. If it is less than, at least once. एक या multiple more than once. Next, third condition. ये आपने कहना है. I will write like this. If Q is greater than or equal to T minus Ns by N minus 1, then what? क्या लिखना चाहेंगे हम? Then each process क्या होगा? सोचिएगा, डायग्राम में सोचिएगा. Each process बोलिएगा, अगर Q की वैल्यू अगर इतनी हो तो एग्जैक्टली आ रहा था. अगर आप बढ़ा दोगे Q की वैल्यू बढ़ा दोगे तो मतलब P1 may not get a chance exactly after T. एग्जैक्टली आफ्टर T के बाद P1 को चांस नहीं मिलेगा. तो कब मिलेगा? कितने बार मिलेगा? क्या होगा जब? बोलिएगा. मतलब P1 will get a chance later to T ना, T के बाद मिलेगा चांस. बोलिएगा. नॉट एटमोस्ट. प्रसन्न जी, यही कंफ्यूजन है इंग्लिश का. यहां एग्जैक्टली था, यहां एटलीस्ट, तो अब एटमोस्ट बचा. सर एटमोस्ट आना चाहिए. नहीं, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम. एटमोस्ट नहीं आएगा. मैक्सिमम एक बार मिलेगा क्या चांस? नहीं. देन ईच प्रोसेस will get a chance एटलीस्ट, फिर से एटलीस्ट आ रहा है. ये ब्यूटी है. एटलीस्ट एवरी, यहां डिफरेंस है. एटलीस्ट एवरी
t seconds. सुनिएगा, एटलीस्ट एवरी t seconds मतलब क्या है इसका, थोड़ा क्लैरिटी से लिख दूंगा. एटलीस्ट एवरी t seconds. No, Shivam, it is wrong. Can anybody explain to me what is the meaning of this? At least every t second. मतलब प्रखर, अगर वो नहीं, हाँ, मतलब ये है एटलीस्ट एवरी टी सेकेंड का मतलब ये है. एटलीस्ट का मतलब पहले आप मुझे बता दो, जस्ट एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम, बिल्कुल सही बात. एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम. मतलब प्रोसेस मिनिमम टी सेकेंड्स वेट करेगा या मिनिमम से बढ़ के. एटलीस्ट का मतलब मिनिमम और मोर. करेक्ट. एटलीस्ट का मतलब मिनिमम और मोर. अगर मैं आपको कहूं, सुनिएगा, यू वेट हियर एटलीस्ट और यू हैव टू वेट हियर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, मतलब मिनिमम आपको हाफ एन आवर वेट करना है, या उससे बढ़ के भी हो सकता है. उससे बढ़ के भी हो सकता है. ठीक है ना. एटलीस्ट एवरी टी सेकेंड्स मतलब P1 may get a chance, P1 may get a chance either at t या more than t. Either it has to wait for t or it may have to wait for more than t. ये मतलब है at least every t seconds. Either it will get a chance exactly at t or maybe beyond t. t के बाद मिलेगा chance. More than t. This is English. And the question asked in the GATE exam was third condition. मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जैक्टली का वर्कआउट कराया. इन द गेट एग्जाम दे आस्क्ड दिस थर्ड क्वेश्चन. और मैं आपको कहूं, इंटरनेट पर काफी लोग इससे मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्लम इज इंग्लिश. प्रॉब्लम इज इंग्लिश. सो q मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू t माइनस एन एस बाई n माइनस वन, मतलब एटलीस्ट एवरी t सेकेंड्स. क्लियर. ये तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है फॉर दिस प्रॉब्लम. इज ओके. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. अब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को बार बार अंडरस्टैंड करके डेवलप कीजिए अपने माइंड में, तब आपको मिलेगा. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से पहले मैं ये क्वेश्चन, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व करेंगे. चलिए, पीवाईक्यू, रीसेंट पीवाईक्यू है ये, रीसेंट पीवाईक्यू, एंड आई वांट यू टू वर्क आउट.
Any answers for this, boys and girls? Come on, any answers for this, boys and girls? You should solve. Consider 4 processes P, Q, R, and S schedule on CPU as per round robin with a time quantum of 4 units. So let's write time quantum of 4. The processes arrive in the order P, Q, R, S in the ready queue. So therefore ready queue में add कीजिएगा. Ready queue में processes को add कर देंगे in the order P, Q, R, S. P, Q, R, S. ठीक है. At time 0 there is exactly, हाँ अब ये देखिएगा conditions यहाँ पर लिखेंगे हम. There is exactly one context switch from S to Q. From S to Q there is only one context switch. Second, exactly one context switch from R to Q. R to Q भी एक ही context switch है. And exactly 2 context switches from Q to R. From Q to R 2 context switch है. 2 context switches from Q to R. There is no context switch from S to P. There is no context switch from S to P. S to P 0 context switches. Switching to a ready process after the termination of another process is also considered a context switch. Look at that. Switching, देखिएगा बच्चों जिन्होंने भी doubt है context switching का, switching to a ready process after the termination of another process is also considered as context switch. Even though we are not saving the PCB, वो भी context switch में add होगा.
एंटायर क्वेश्चन इज नॉट गिवन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ अच्छा क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है मैं यहां पे लिख दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट be the best burst times of processes PQRS, which of them cannot be the burst time? चलिए अब मैं टाइम लूंगा थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के लिए है। एक एक ऑप्शन को लेकर, बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। शायद आपने वही कर रहे हो। क्या करना है, एक एक ऑप्शन को लेकर अप्लाई करना है कंडीशंस। दैट इज नॉट करेक्ट अप्रोच बॉयज एंड गर्ल, दैट इज नॉट करेक्ट अप्रोच। अगर आप एक एक ऑप्शन लेकर ट्राई करोगे और देखोगे कंडीशंस अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ आप लोग वही कर रहे हो, मालूम है मुझे। वैसा नहीं करना है, आपने गैंट चार्ट बनाना है। एक ही गैंट चार्ट बनाकर कंक्लूजन करना है। बच्चों सुनिएगा मेरी बात, एक ही गैंट चार्ट बनाकर कंक्लूजन करना है, सिर्फ एक ही गैंट चार्ट। कैसे करेंगे सुनिएगा। टाइम 0, सबसे पहले कौन रन करेगा, पी, राइट। फिर उसके बाद क्यू रन होगा फर्स्ट राउंड, फिर उसके बाद आर रन होगा, फिर उसके बाद एस रन होगा। अब देखिएगा, सुनिए मेरी बात, यहां पर इंटरेस्टिंग कंडीशन है। यहां पर एक फर्स्ट कंडीशन हमें मिल जाएगा। अब वी डोंट नो व्हाट इज द बर्स्ट टाइम ऑफ पी, क्यू एंड आर एंड एस। इट मे बी मोर देन 4, इट मे बी लेस देन 4, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये कंडीशन से डिसाइड करेंगे। देखिएगा, S2P, S2P देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट स्विच, मतलब S2P के बाद शेड्यूलिंग हो ही नहीं सकती, S के बाद P शेड्यूल हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये हुआ, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट आई शुड अज्यूम, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, क्या अज्यूम करेंगे हम। S2P कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट, बोलिए, दिस इंप्लाइज दैट the burst time of P is definitely less than or equal to 4। ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या हम इसे डिराइव करेंगे, बोलिए। द फर्स्ट कंडीशन इज बर्स्ट टाइम ऑफ P लेस देन और इक्वल टू 4। अगर P का बर्स्ट टाइम ग्रेटर देन 4 होता तो यहां पर P आता है इसके बाद, तो और इसके बाद P शेड्यूल होता, तो कंडीशन वायलेट हो जाता। तो डेफिनेशन, ये फर्स्ट कंडीशन हमें मिलेगा। सेकेंड, अब देखेंगे Q2R, Q2R दो कॉन्टेक्स्ट स्विच है, एक हो चुका, राइट, एक हो चुका। S2Q, सुनिएगा बच्चों, S2Q सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच है, S2Q, S2Q सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच है। मतलब S के बाद जो यहां पर आएगा प्रोसेस, वो आएगा Q, पक्का इसके बाद Q आना है। अगर Q का भी लेस देन और इक्वल टू 3 होता तो शायद S का Q कंप्लीट हो जाता, तो S के बाद Q ना आता। तो डेफिनेटली दिस इंप्लाइज दैट Q इज प्लेस्ड हियर। तो यहां पर Q आएगा, यहां पर Q आएगा, Q शेड्यूल होगा, तो Q प्रीएम्प्ट हुआ, राइट। देखिएगा Q2R, Q2R एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुका, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो चुका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग। Q2R एक हो चुका, और उसके बाद Q2R और एक होना है कॉन्टेक्स्ट स्विच, और एक होना है कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो यहां पर आप देखिएगा Q2R अगर S कंप्लीट हो चुका है और S से पहले आ रही है, तो यहां पर डेफिनेटली R आएगा, यहां पर डेफिनेटली R आएगा, ठीक है, डेफिनेटली R विल कम हियर। तो अब देखेंगे कंडीशंस कौन से फुलफिल हो गए। S2Q का कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। S2Q वन कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। PQRSQ ये भी फुलफिल हो गया। अब देखेंगे Q2R के दो कंडीशन भी फुल हो गए, Q2R ये भी फुलफिल हो गए। सुनिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा R2Q हुआ क्या, अब तक R2Q नहीं हुआ, R2Q नहीं हुआ। तो मतलब ये R के बाद कंपल्सरी कौन सा प्रोसेस आना चाहिए,
आर के बाद कौन सा प्रोसेस आना चाहिए कंपल्सरी टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन? क्यू आना चाहिए। ये क्यू यहां पर आने के लिए, लिसन टू मी नाउ, ये क्यू यहां पर आने के लिए मतलब ये हुआ क्यू का बर्स्ट टाइम ये यहां पर 4 यूनिट्स के लिए रन होना है, यहां पर भी 4 यूनिट्स के लिए रन होना है, और यहां पर फिर रन होना है, मतलब द बर्स्ट टाइम ऑफ क्यू शुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन डैश। बोलिए, ग्रेटर देन 8। बर्स्ट टाइम ऑफ क्यू कंपल्सरी शुड बी ग्रेटर देन 8। लेस देन 8 हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। then only this condition will be fulfilled, then only these conditions will be fulfilled. I hope you are understanding. तो अब चलिए देखेंगे यहां पर q is greater than 10, फाइन सर। बस टाइम p less than or equal to 4 पूर्व में है, ठीक है। बस टाइम ऑफ q greater than 8, करेक्ट, पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। q इक्वल टू 7 इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर बना डी। बोलिए, समझ में आ गई बात? कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम? नॉट बाय हिट एंड ट्रायल, नॉट बाय ड्राइंग 4 गैंट चार्ट्स, ओनली 1 गैंट चार्ट, सिर्फ एक ही गैंट चार्ट से करेंगे हम, ठीक है? दिस इज रीजनिंग, ये ऐसा वर्कआउट करना है क्वेश्चन को। करेक्ट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन, डबल स्टार। I want you to read this question and try now. अच्छा, इससे पहले मैं ये चाहूंगा वर्कआउट करने के लिए, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पोस्टपोन करेंगे। आई विल मीन वाइल आस्क यू टू वर्कआउट दिस क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, दिस क्वेश्चन प्लीज वर्कआउट दिस। Remaining time of the class we'll work out this question and close. It is also interesting. ये सिंबल का मतलब क्या है बच्चों? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है, सम पीपल आर राइटिंग टू इट, इट इज टोटली इनविजिबल टू मी। इसका मतलब क्या है? थैंक यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू लिखा है, राइट, ओके, राइट राइट राइट। चलिए ये क्वेश्चन एक बार आज की क्लास में ये वर्कआउट करेंगे। Consider processes P1 and P2 arriving in the ready queue at time 0 with the following properties. P1 needs a total of 12 units of CPU time and 20 units of IO time. After every 3 units of CPU time, P1 spent 5 units on IO. P2 needs a total of 15 units of CPU time and no IO. P2 arrives just after P1. Compute the completion times of P1 and P2 using the following technique. सबसे पहले SRTF से वर्कआउट करो। मैं वर्कआउट करूंगा SRTF से, वो बेसिस पर आप राउंड रॉबिन में करना है। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप ट्राई कीजिए। This question is from not GATE but TIFR का क्वेश्चन है।
ओके अर्नब, चलिए बच्चों 10 मिनट्स बाकी है, मुझे करने दीजिए।
Shall I start? Shall I start? Okay. चलिए पार्टिसिपेट अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ आप पार्टिसिपेट कीजिए सो दैट यू आर ऑल्सो वर्किंग. चलिए हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे. ये रेडी क्यू है, सॉरी, दिस इज अ रेडी क्यू. In the ready queue, I have processes P1 followed by P2. और P1 का जो रिक्वायरमेंट है देखिएगा, P1 का जो रिक्वायरमेंट है, it is saying that 12 units of CPU time and 20 units of IO time. Total 12 units of CPU burst and 20 units of IO burst. How is this distributed? This is distributed as 3 units of CPU, 5 units of IO. 3 units of CPU, फिर 5 units of IO, फिर 3 units of CPU, फिर 5 units of IO. 3 plus 3 plus 3, 9 और 3 units. 3 units of CPU, 5 units of IO. So IO के 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 12. ये साइकिल है प्रोसेस P1 की ये साइकिल है. बर्स्ट टाइम, IO बर्स्ट टाइम. मतलब इनिशियली P1 का बर्स्ट टाइम रहेगा 3 यूनिट्स. वो 3 यूनिट्स के लिए रन करेगा, फिर 5 यूनिट्स के लिए IO का कंप्लीट होने के बाद फिर 3 यूनिट्स के लिए आएगा वो. P2 का क्या है भैया? P2 रिक्वायर ओनली टोटल ऑफ 15 यूनिट्स. P2 needs a total of 15 units of CPU, no IO. P2 का टोटल है 15 यूनिट्स बर्स्ट टाइम. दैट्स इट. तब हमें वर्क करना है SRTF एल्गोरिथम से एंड कंप्यूट द कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस A, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2. चलिए वहां पर वर्कआउट करेंगे. स्टार्ट. CPU. चलिए आंसर दीजिएगा बच्चों. एट टाइम 0 वी आर स्टार्टिंग बिकॉज दे आर अवेलेबल एट टाइम 0, राइट? टाइम 0, यस. तो अब जब SRTF हम अप्लाई करेंगे एट टाइम 0, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है ये बताइए टू कंपीट विद P2. P2 से कंपीट करने के लिए P1 का बर्स्ट टाइम कितना है? 3 है. वेरी गुड. नॉट 12. अगर आप 12 बोलोगे तो गलत है. 12 टोटल है उसका, बाइफरकेट हो गया 3 एंड 15. तो नेचुरली P1 इज शॉर्टर, तो P1 रन करेगा. कितना रन करेगा? 3 यूनिट्स के लिए. इसके बाद क्या होगा? वो IO के लिए जाएगा. P1 कितने टाइम के लिए? 5. मतलब क्या टाइम पे कंप्लीट होगा? 8. और यहां क्या होगा? P2 रन करेगा. सर कितने टाइम के लिए? 5 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि टाइम 8 P1 विल कम बैक इनटू रेडी क्यू अगेन, और उसका फिर नेक्स्ट बस टाइम 3, और इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 10. 3 और 10, ये 3 और 10 से कंपटीशन होगा, तो 3 शॉर्टर. तो मतलब P1 फिर रन करेगा 3 यूनिट के लिए. सेकंड 3 यूनिट के लिए रन करेगा. सेकंड 8 प्लस 3 11. 11 प्लस अपना सेकंड IO के लिए जाएगा P1. हाउ लॉन्ग? 5 यूनिट्स. मतलब क्या टाइम पर कंप्लीट करेगा? 16. फिर यहां पर P2 फिर से रन करेगा. कब तक? 16. 5 यूनिट्स. 16. इसका बचा कितना? 5. और P1 कंप्लीट करेगा IO एट टाइम 16, अगेन कम बैक टू रेडी क्यू, और अपने थर्ड IO बर्स्ट टाइम, थर्ड CPU बर्स्ट टाइम से कंप्लीट करेगा 3 एंड 5. 3 स्मॉलर, so P1 again runs. कितना टाइम? 3 यूनिट्स. थर्ड 3 यूनिट के लिए रन कर रहा है. 19. 16 प्लस 3. थर्ड 1 2 3. फिर IO P1 थर्ड IO के लिए जा रहा है 5 यूनिट्स. 19 प्लस 5 24. तो टाइम 24 एट टाइम यहां पर P2 रन करेगा, राइट? लास्ट 5 यूनिट्स के लिए देखिएगा, पूरे 5 यूनिट्स रन हो गए. 24. P2 has completed, boys and girls, P2 has completed 3 of its burst. 5 plus 5 plus 15, P2 is over. मतलब P2 का completion time है 24. आंसर फॉर फर्स्ट. अब इसके बाद क्या है देखिएगा. इंटरेस्टिंग. At time 24, P1 completes its third IO and go to ready queue. And it has completed how many bursts? 1 2 3. 4 bursts है इसके. 1 2 3 4. अब at time 24, P1 will run on CPU for another 3 units, 27. And at 27, it will go for its last IO. Am I right? 5 units के लिए. मतलब 32. ठीक है ना? अब यहां पर P2 तो है नहीं, मतलब 27 से 32 तक प्रोसेसर इज आइडल.
idle. And at 32 it will come into ready queue, it will come into इसके कितने हो गए P1 के 1 2 3 4 12 minutes तो हो चुके, but completion will never be from running state, completion remember will never be from running state. तो यहां पर आएगा ready queue में और रन करेगा for negligible time 32 and complete, ऐसे होगा, don't forget this. हाँ टाइम तो 32 है यहां पर भी, लेकिन एक्चुअल प्रोसीडिंग्स फॉलो करना है आपको, प्रोसीडिंग्स फॉलो करना है. So this is the completion time of P1. This is the completion time of P1. बोलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है? So completion time of P1 is 32 and completion time of P2 is 24. P4. So this is using SRTF. As a homework आप ट्राई करना है, as a homework आप ट्राई करना है using round robin क्या होगा, that is also interesting. Second question देखिएगा, using round robin with time quantum of 4 units. आप वर्कआउट कीजिएगा और मुझे आंसर बताइए इसका क्या है. यूजिंग राउंड रॉबिन क्या है आंसर? व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 एंड P2 यूजिंग राउंड रॉबिन? राउंड रॉबिन डायरेक्ट 12 बस टाइम लेके करेगा ना, कैसा करेगा 12 मिनट्स? एवरी प्रोसेस P1 रन फॉर 3 यूनिट्स, फिर उसके बाद आईओ करना है. हाउ कैन इट रन 12 यूनिट्स एट स्टेज? आई होप यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट. आकाश 12 मिनट्स कैसे रन करेगा डायरेक्ट? टाइम क्वांटम 3 है. देखिए जस्ट स्टार्ट करके छोड़ूंगा मैं यहां पर आपके लिए, जस्ट स्टार्ट करके छोड़ूंगा, आप बताइएगा मुझे. आई जस्ट स्टार्ट ऑफ CPU. बोलिए फर्स्ट एट 0 व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हु विल रन? P1 विल रन. कितने टाइम के लिए रन करेगा आकाश? बोलिए कितने टाइम के लिए रन करेगा? 3 यूनिट्स. टाइम क्वांटम इज 4 लेकिन 3 यूनिट्स के लिए रन करेगा, फिर आईओ के लिए जाएगा वो, लाइक अर्लियर ओकेशन. यहां पर P2 रन करेगा कितने टाइम के लिए? 4 यूनिट्स. जब तक अगर आईओ कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर P2 ही रन करेगा. यहां पर आप समझ रहे हो, 7 पे अगर इसका आईओ कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया आ गया तो देन वी दैट, अदरवाइज P2 ओनली विल रन, P2 only will run another quantum. I hope you are following my point. अगर 7 पर कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ P2 ही है, then again P2 only will run. Understood? Now will you do it from here? Do it. You should do it. ठीक है. अब मैं एक और क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन लेकर मैं आगे बढ़ूंगा. थियोरेटिकल क्वेश्चन
आंसर करके हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मीनवाइल ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, आई वांट एवरीबॉडी टू वर्क आउट सिंसियरली एंड सीरियसली। एमएसक्यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, come on fast. Okay, very good. Which of the following statements is or are correct in the context of CPU scheduling? CPU scheduling के context में, paradigm में, ये statements में से कौन से correct है? Number one, the goal of CPU scheduling is to maximize CPU utilization, ठीक है, but minimize throughput? No, ये गलत हो गया। आप CPU utilization को maximize करोगे तो throughput भी maximize होगा automatically, minimize तो नहीं होगा। So wrong. Turnaround time includes waiting time, yes or no? Turnaround time is completion time minus arrival time, बीच में waiting time है, पक्का है, so therefore true. Implementing preemptive scheduling needs hardware support, हाँ, जैसा कि अगर राउंड रॉबिन से preemption हो रहा है, टाइमर इंटरप्ट है, priority process से preempt हो रहा है, टाइमर इंटरप्ट है, SRTF में preemption हो रहा है, इंटरप्ट है, so therefore hardware support is needed. Round robin policy can be used, listen to me, even when the CPU time required by each of the process is not known a priori. a priority नहीं है, ये a priori है, a priori. a priori का मतलब beforehand, पहले से ही आपको पता होना चाहिए, beforehand, a priori. बोलिए ट्रू है, करेक्ट, फॉल्स है? Round robin policy can be used even when the CPU time required by each of the process may not be known. हाँ बिल्कुल, अगर कोई प्रोसेसेस जो आए हैं उनका टोटल बर्स्ट टाइम आपको पता ना हो तब भी हम राउंड रॉबिन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नो नीड टू नोट द बर्स्ट टाइम इन ए प्रायोरी। ए प्रायोरी बर्स्ट टाइम कौन से एल्गोरिथम में रिक्वायर्ड है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, एसआरटीएफ में, एलआरटीएफ में रिक्वायर्ड है, यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राउंड रॉबिन, सो देयरफॉर दिस इज ट्रू एंड हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी प्लस सी प्लस डी। Yes. So this is the type of question, the variety of questions. जो टिपिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये बेसिस पर अगर आप अच्छे तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे तो दूसरे पीवाईक्यूज आपको बिल्कुल लड्डू हो जाएंगे या हलवा हो जाएंगे। ठीक है, सो डू इट। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन विद मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़े बहुत जो और एक एक मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है वो कंप्लीट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग, threads and multi-threading. So meanwhile, you continue to solve the problems, right? Which I told. So take care. Thank you. Good night.
Yes, good evening, Shivam. Good evening, boys and girls. Very good evening, Prakhar, Nina. Give me the clearance. Is everything clear? Audibility and visibility? Okay, good. Yes. So very good evening to all of you. Welcome to Unacademy platform. Dr. Khalil Khan, ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीपीयू शेड्यूलिंग। वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग सीपीयू शेड्यूलिंग। क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछना चाहूँगा कि कुछ और अगर डाउट हो, इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स दैट यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हो बिफोर वी स्टार्ट। कोई भी शेड्यूलिंग टेक्निक में या कोई भी न्यूमेरिकल में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल हो, तो प्लीज आस्क मी। अगर आप बात भी करना चाहो तो बात भी कर सकते हो मुझसे। यू कैन कम ऑन टू द माइक। यस, गुड इवनिंग। हाँ शिवांश, आई वुड लाइक यू टू स्ट्रगल फॉर चैलेंज क्वेश्चन। मैं चाह रहा हूं कि आप चैलेंज क्वेश्चन में स्ट्रगल करो। मैं इतना आसानी से आपको आंसर नहीं दूंगा, आप स्ट्रगल करना है। क्योंकि मैं बताने से क्या फायदा है, बोलिए आप। जब तक आप नहीं करोगे फायदा क्या है? आपने स्ट्रगल करना है। हम इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बेस्ड ऑन दैट यू शुड ट्राई। हाँ, मैं तो बता दिया आपको अप्रोच कैसे करना है, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। सो वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू हु केम लेट। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा ना, वो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो राउंड रॉबिन से है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑन लास्ट टॉपिक इन शेड्यूलिंग। वो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग।
multi-level queue scheduling. What is this multi-level queue scheduling? So far जो हमारा discussion रहा है CPU scheduling technique में, we were assuming that we were having a single ready queue system. We were assuming we have single ready queue system. मतलब यह है कि the system will have only one ready queue like this. This is a ready queue. And this is a CPU. So we were assuming essentially that all processes are placed in this ready queue. हर किस्म का process, हर type का process, जो भी type का हो, it will be placed in this ready queue. फिर यहाँ पर हमारा short term scheduler होगा, then that will decide using criteria of scheduling like round robin, या priority, या shortest job first, या whatever. It will apply the criteria to select the process. एक ready queue रहने से drawback ये है system के, there are multiple drawbacks of having single ready queue. Now, when I say all processes of all type are placed in this ready queue, all processes of all type are placed in this ready queue, then what is the drawback? Drawback क्या है? देखिएगा, drawback ये है कि when I say type, अगर यहाँ पे हम थोड़ा discuss करेंगे, what are the types of processes? Process type of process. You can have OS process. Then you can have user interactive process are placed in this ready queue. All processes of all type are placed in this ready queue. Then what is the drawback? Drawback क्या है? देखिएगा, drawback ये है कि when I say type, अगर यहाँ पे हम थोड़ा discuss करेंगे, what are the types of processes? Process type of process. You can have OS process. Then you can have user interactive process. फिर उसके बाद आप बोलोगे some foreground process, some background process or backup process. Then you can even have student process, faculty process. इस तरह you can have different categories of process. Among all, OS is highest category, highest type, highest priority. ये बैकअप प्रोसेस जो है सबसे लोएस्ट प्रोसेस, यूजर इंटरैक्टिव. फिर उसके बाद आप बोलोगे सम फोरग्राउंड प्रोसेस, सम बैकग्राउंड प्रोसेस और बैकअप प्रोसेस. देन यू कैन इवन हैव स्टूडेंट प्रोसेस, फैकल्टी प्रोसेस. इस तरह यू कैन हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस. Among all, OS is highest category, highest type, highest priority. ये बैकअप प्रोसेस जो है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी. तो irrespective of type or category or priority, all processes are injected into single ready queue. ये बैकअप प्रोसेस जो है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी. तो irrespective of type or category or priority, all processes are injected into single ready queue. Yes, Prasanjit, good evening. Having single ready queue containing all the types of processes pose two important drawbacks. दो ड्रॉबैक हो गए. क्या है दो ड्रॉबैक्स? Number one, imagine there are 2000 processes here. Having a mix of all these type,
ऑल ये पूरे कैटेगरीज के मिक्सअप 2000 प्रोसेसेस है। इसमें से मुझे अमंग फोरग्राउंड प्रोसेस आई हैव टू सेलेक्ट वन। समझ रहे हो बात? इसमें मे बी सम 100 फोरग्राउंड प्रोसेसेस होंगे, लेकिन पूरे मिक्स है, इंटरमिक्स। तो मुझे फिल्टर करना पड़ेगा ऑल दी 100 फोरग्राउंड प्रोसेसेस, और उस 100 फोरग्राउंड प्रोसेसेस से मुझे क्राइटेरिया अप्लाई करके एक प्रोसेस सेलेक्ट करना होगा। तो दैट मीन्स आई नीड ए लॉट ऑफ सर्चिंग एंड फिल्ट्रेशन टाइम। फिल्ट्रेशन एंड सर्चिंग, मुझे सर्च करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा ऑल अमंग 2000 प्रोसेसेस, दोज विच आर फोरग्राउंड। दैट इज वन। सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ हैविंग ए सिंगल रेडी क्यू सिस्टम इज, एक रेडी क्यू होगी तो सिर्फ एक ही शेड्यूलिंग टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ आई एम यूजिंग राउंड रॉबिन, देन आई हैव टू यूज राउंड रॉबिन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हर प्रोसेस को सिर्फ राउंड रॉबिन ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं, अगर मुझे चाहिए कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स यूज करूं, रॉबिन ही अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं, अगर मुझे चाहिए कि मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स यूज करूं, like maybe for OS I use round robin, for interactive I use priority, for foreground I use like HRRN, something, some different category. Then single ready queue system, it is not possible. So that means multiple scheduling techniques cannot be applied, cannot be used on different categories of process. These are the two limitations. These are the two drawbacks of single ready queue system. बात clear है? Is it okay? Have you understood? What is the drawback of having a single ready queue system? जो अब तक हमने scheduling techniques में देखे हैं. Yes. Now, if you don't want these two drawbacks, listen to me. If you don't want these two drawbacks, अगर आप चाह रहे हो कि दोनों भी drawbacks ना हो, then I have to go for a system which is called multi-level queue scheduling. Multi-level queue scheduling. Multi-level queue scheduling. See, it's written here very clearly, Anurag. So if you come late and then if you ask for repetition, this would be the problem, waste of time. Having a single ready queue in the system will incur two drawbacks. Number one, when I'm having all types of processes placed in the single ready queue, like I said, 2000 processes of all types mixed up together. And if I want to select a particular category of process, then I need a lot of filtration and searching time, number one. Second, having a single ready queue means I have to apply only one scheduling technique for all categories of process. लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूं कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग scheduling technique use हो, that is not possible in single ready queue. These are the two drawbacks of single ready queue system. So if you want to go for overcoming these two problems, then you have to go for multiple queues. Multi-level queue scheduling मतलब now you will have multiple queues rather than एक ready queue रहने के बजाय you will have multiple queues for one single CPU. एक CPU के लिए multiple ready queues होंगे। ऐसे देखिएगा, ये आपका CPU है, ये CPU. You will call this as ready queue 1, for example. This is ready queue 2, this is ready queue 3, ready queue 4, ready queue 5. This is highest process, operating system processes, interactive editing, batch, student process. These are lowest priority. ये highest है तो ये lowest है, गलती से highest लिखा गया है, lowest priority. ये highest है, ये lowest है. तो now अब क्या होगा?
जब भी कोई न्यू प्रोसेस आएगा तो हम उससे डिटरमिन करेंगे कि वो टाइप क्या है, प्रोसेस का टाइप क्या है. इज इट ओएस, इज इट इंटरैक्टिव, इज इट एडिटिंग, इज इट बैकग्राउंड, इज इट बैच, इज इट स्टूडेंट प्रोसेस. एंड अकॉर्डिंगली हम वो प्रोसेस को रेस्पेक्टिव क्यू में ही इंजेक्ट करेंगे. तो नेचुरली नो फिल्ट्रेशन टाइम, ना फिर सर्चिंग टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा. और सेकेंडली, मेरे पास मल्टीपल रेडी क्यूज है. मतलब क्या हुआ कि आई कैन यूज डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक ऑन डिफरेंट क्यूज. मे बी फॉर ऑन दिस रेडी क्यू आई में फॉलो राउंड रॉबिन. यहां पर हम प्रायोरिटी फॉलो करेंगे, यहां पर हम HRRN फॉलो करेंगे, यहां पर कुछ और फॉलो करेंगे. लास्ट क्यू में जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करते हैं. बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ओवरकम. बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ओवरकम. ठीक है. लेकिन यहां पर जनरली जो टाइप और कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस आप बनाओगे दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. जैसे मैंने कहा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी. तो क्या कोई मुझे बताएगा, Aryan, what is the problem? How filtration problem is solved? What is filtration problem? Have you understood? Aryan, tell me. Filtration का मतलब क्या है? 2000 प्रोसेसेस में से आई हैव सम 100 यूजर इंटरैक्टिव प्रोसेस लेट अस से. तो मुझे सर्च करके फिल्टर आउट करना है पूरे 100. दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन टाइम. क्या मुझे फिल्ट्रेशन टाइम यहां पे रहेगा? बोलिए. देयर इज नो फिल्ट्रेशन टाइम, क्योंकि रेस्पेक्टिव प्रोसेस आएगा अपनी अपनी क्यू में जाएगा. वेयर इज फिल्ट्रेशन? व्हाई डू आई हैव टू अप्लाई फिल्ट्रेशन नाउ? देयर इज नो नीड ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट चलिए, ये हाई प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है. तो नो डाउट इट इज सॉल्विंग बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिल्ट्रेशन सर्चिंग एंड द ड्रॉबैक ऑफ हैविंग मल्टी लेवल डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक्स. वो भी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. लेकिन दिस विल इंट्रोड्यूस, मल्टी लेवल क्यू विल इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर ए नया प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेगा. क्या कोई सोच समझ के बता सकता है कि व्हाट मे बी द इश्यू दैट मे हैपन हियर? क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहां पर मल्टी लेवल क्यू में? एनीबॉडी? नो नॉट शेड्यूलिंग. हाँ, एक इशू ये है कि आपको शेड्यूलिंग क्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए मैं यहां पे कह रहा हूं दिस हाईएस्ट प्रायोरिटी. ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है. तो ये जब हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू है तो मतलब यू कैन नॉट गो टू लो लेवल प्रायोरिटी क्यूज अनलेस एंड अंटिल दिस क्यू इज एम्प्टी. अगर ये एम्प्टी हो तो अभी आप सेकंड क्यू पे जाओगे. द कंडीशन फॉर शेड्यूलिंग प्रोसेसेस फ्रॉम थर्ड क्यू इज दैट फर्स्ट टू क्यूज एम्प्टी होना चाहिए. अगर फर्स्ट टू क्यूज एम्प्टी हो तो आप थर्ड क्यू में जा सकते हो. फोर्थ क्यू में जाने के लिए फर्स्ट 3 क्यू शुड बी एम्प्टी. फिफ्थ क्यू में जाने के लिए फर्स्ट 4 क्यू शुड बी एम्प्टी. तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हुआ कि processes in low level or lowest level queue will be subjected to suffer from the problem of starvation. ये जो processes रहेंगे, processes in low level or lowest level queue will be subjected to suffer from the problem of starvation. ये जो processes रहेंगे लास्ट में, ये processes को प्रॉब्लम होगा starvation. बोलिए, समझ गए? Is it okay? Starvation to processes lying in low level queues. Yes. तो अगर आप ये प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन ओवरकम करना चाह रहे हो टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट फुल, सर्टेन एक्सटेंट, अगर आप ये स्टारवेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, देन वी हैव टू ऐड ए कॉन्सेप्ट टू मल्टी लेवल क्यू कॉल्ड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. देखिएगा, फीडबैक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, देन वी हैव टू ऐड ए कॉन्सेप्ट टू मल्टी लेवल क्यू कॉल्ड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. देखिएगा, फीडबैक, फीडबैक का कॉन्सेप्ट ऐड करना होगा मल्टी लेवल क्यू. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक? लेट मी एक्सप्लेन. दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय मींस ऑफ दिस डायग्राम. हैव अ लुक हियर. तो यहां पर भी आई हैव मल्टीपल क्यूज, Q1, Q2, Q3, 0, 1, 2. I have 3 queues. This is not a cup, this is CPU. ये CPU है. ठीक है. तो now what happens? What is the concept of feedback? Let us try to understand. Feedback का मतलब क्या है? And how starvation is going to be prevented, overcome to certain extent in feedback. सुनिए. Now what happens is, unlike earlier occasion, यहाँ पर क्या हो रहा था, जब कोई प्रोसेस आ रहा था वो रेस्पेक्टिव क्यू में जा रहा था.
अब यहां पर वैसा नहीं होगा. Every process will not go into respective queue, but every process will be injected, admitted into the first queue. All new processes, या वो OS प्रोसेस रहने दीजिए या इंटरैक्टिव एडिटिंग, जो भी टाइप का स्टूडेंट, बैकग्राउंड, बैकअप, बैच, जो भी process of every type and category will be injected into the first queue. ठीक है. यहां रेडी क्यू फर्स्ट क्यू में, रेडी क्यू 0 में we will be using round robin, for example, with some time quantum of 5 units, let us say. मतलब हर process of every category will get a time quantum of 5 units. Every process of every category will get 5 units of time to run. Suppose if it completes its execution, will leave. अगर 5 units में complete हो गया process, it will leave the CPU. लेकिन अगर 5 units टाइम आउट हो गया, अगर process ने complete नहीं किया 5 units के अंदर, तब क्या करेंगे हम? We will preempt the process. 5 units of time to run. मतलब हर process of every category will get a time quantum of 5 units. Every process of every category will get 5 units of time to run. Suppose if it completes its execution, will leave. अगर 5 units में complete हो, for example, with some time quantum of 5. ठीक है. यहां रेडी क्यू फर्स्ट क्यू में, रेडी क्यू 0 में we will be using round robin, for example, with some time quantum of 5 units, let us say. मतलब हर process of every category will get a time quantum of 5 units. Every process of every category will get 5 units of time to run. Suppose if it completes its execution, will leave. अगर 5 units में complete हो गया process, it will leave the CPU. लेकिन अगर 5 units टाइम आउट हो गया, अगर process ने complete नहीं किया 5 units के अंदर, तब क्या करेंगे हम? We will preempt the process. Processes in ready queue1 are scheduled only when no process exists in ready queue. ठीक है, ये कंडीशन हम बाद में बोलेंगे. अब यहां preempt होकर सेम क्यू में नहीं जाएगा, अनलाइक अर्लियर ओकेशन. सेम क्यू में नहीं जाएगा प्रोसेस. इट विल डिसेंड डाउन टू नेक्स्ट लेवल क्यू, नेक्स्ट लेवल क्यू में आ जाएगा, रेडी क्यू1 में आ जाएगा. ठीक है ना. अर्लियर ओकेशन सेम क्यू में नहीं जाएगा प्रोसेस. इट विल डिसेंड डाउन टू नेक्स्ट लेवल क्यू. नेक्स्ट लेवल क्यू में आ जाएगा, रेडी क्यू1 में आ जाएगा. ठीक है ना. If the process needs more than 5 units of time, it will be preempted and put back into the next level queue. This concept is called feedback. आपने कंट्रोल सिस्टम्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक चैनल है. इट विल बी फेड बैक इनटू द नेक्स्ट लेवल क्यू. और नेक्स्ट लेवल क्यू में जब भी कंडीशन फॉर सर्विंग प्रोसेसेस इन नेक्स्ट लेवल क्यू इज व्हाट? लुक एट दिस. Processes in ready queue1 are scheduled only when no processes exist in ready queue. जब यहां कोई प्रोसेस ना हो तब हम यहां से शेड्यूल करेंगे. और यहां पर भी हम राउंड रॉबिन यूज करेंगे विद अ टाइम क्वांटम इज इक्वल टू, लेट अस से 10 मोर टाइम क्वांटम. अर्लियर प्रोसेस हैज रन फॉर 5 ऑलरेडी. अब यहां उसे 10 यूनिट्स का टाइम क्वांटम मिलेगा. विद इन 10 यूनिट्स अगर वो कंप्लीट हो चुका तो छोड़ देगा सिस्टम. अगर नहीं, it needs more than 10, that means total 15, earlier 5 and now 10, 15. It needs more than 15 units, so preempt होगा और feedback होगा last level queue. ये last level queue. The processes in ready queue are scheduled only when no process is there in ready queue 1 and ready queue 0, obviously. The longer processes gradually drift downward, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे. Longer processes, those processes that take more time, they will drift down to लो लेवल. तो जब भी प्रोसेस को फ्यूचर में रन करना होगा सेकंड लेवल क्यू, लेकिन क्यू नंबर 2 से जब रन करेगा प्रोसेस, अब यहां पर तो मुझे इंश्योर करना है इट शुड गेट कंप्लीटेड. तो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक टू इंश्योर कंप्लीशन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो मतलब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में जो शेड्यूलिंग टेक्निक यूज होगी लास्ट क्यू में वो है FCFS. व्हाई? इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. तो कंप्लीट करेगा प्रोसेस. दिस इज फीडबैक कॉन्सेप्ट. तो यहां पर आप बोलो सर कैसे स्टारवेशन ओवरकम हो? नंबर 1, जो लॉन्ग प्रोसेसेस होंगे ना,
उनकी प्रायोरिटी लो होगी जनरली, शॉर्ट प्रोसेसेस की प्रायोरिटी लो हो हाई होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस बहुत शॉर्ट रहेंगे, so that's why their priority is high. Long processes, batch process, student process, they will be long processes, their priority is low priority. तो जब लॉन्ग प्रोसेसेस होंगे दे विल नेचुरली कम टू द लास्ट क्यू, यहां पर भी लास्ट क्यू में आएंगे, लेकिन आने से पहले वी आर मेकिंग श्योर दैट दे हैव एटलीस्ट स्टार्टेड देयर एग्जीक्यूशन, दे हैव रन फॉर ए गुड अमाउंट ऑफ टाइप 5+10 यूनिट्स बिफोर कमिंग डाउन टू द लो लेवल क्यू। पिछले उसमें क्या हो रहा था, यहां पर डायरेक्टली प्रोसेस यहां पर आके काफी देर के लिए वेट कर रहा था विदाउट रनिंग ऑन सीपीयू, लेकिन यहां पर भी लास्ट क्यू में आ रहा है प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस, लो प्रायोरिटी प्रोसेस, लेकिन आने से पहले उसने कुछ अपना इंटरैक्शन इंप्रूव किया है। हाउ? इट हैज रन ऑलरेडी 5+10 यूनिट्स, दैट इज अ पैराडाइम। So at least we are saying that it has started the execution rather than not at all getting a chance to start for long time here. At least यहाँ start तो हुई गाड़ी start हुई यहाँ पर तो start भी नहीं हुई पिछले बार। So all low priority process will descend down, medium term priority here, highest priority will get completed from first. So we are maintaining priority here also by setting the time quantum value in such a way all high priority process यहां से complete होंगे, medium term यहां से complete होंगे, lowest level priority process यहां से complete होंगे। This is the ideology of multi-level feedback queue. अब बोलिए, जो डाउट हो तो अब पूछिएगा, व्हाट इज मल्टी लेवल क्यू, व्हाट इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू? ये है कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ज्यादा चांस नहीं है यहां पर, अब तक पूछा भी नहीं गया है, सिर्फ एक बार गेट क्वेश्चन में आया है विद रिगार्ड टू मल्टी लेवल क्यू, थियोरेटिकल क्वेश्चन। SJF is non-preemptive. SJF you cannot be REN, you cannot implement SJF, you have already seen that. That's why we go for FCFS. SGF needs burst time, otherwise you will have to go for predicted burst time. Why should I go for it? Any more questions, any more doubts? Single run के बाद starvation तो अभी I've already told, I didn't say that starvation is totally overcome. No, in comparison to multi-level queue, multi-level feedback queue is better in terms of controlling starvation. The processes that lie in the low level queue will still have starvation. क्यों? इनको सर्विस करने के लिए first two queues should be empty. लेकिन when the process come to the low level queue, फिर से repeat कर रहा हूं, when the process come to the lowest level queue, we have ensured that it has run for a good amount of time. वो start हो गया है, interaction उसका already start हुआ है. See, generally, Nina, the point is the rule for setting this time quantum is to make sure that all high priority processes are completed within this. No, Aryan, it doesn't go. The way we are setting the time quantum is to make sure that on an average, all high priority processes are completed in the first queue itself. वो basis पर ही हम time quantum set करेंगे. हम देखेंगे on an average high priority process कितना time लेगे generally 4 to 5 units, तो हम time quantum 5 set कर देंगे so that they will complete from the first queue itself. ऐसा set होगा. ये कोई lucky number से set नहीं हो रहा है. ये calculations के basis पे set हो रहा है. ये all medium term processes will get completed by 15 units. ठीक है ना? 15 units. So I hope you understood the concept. It's a beautiful ideology. Ideology बहुत अच्छी है. कोई और डाउट अगर हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज, बिकॉज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग नाउ, और जब सीपीयू शेड्यूलिंग का चैप्टर एंड हो गया तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बिलोंग टू 95% कैटेगरी, नॉट 5%. मैं चाह रहा हूं कि यू शुड नॉट बिलोंग टू 5% कैटेगरी, यू शुड बिलोंग टू 95%. मतलब मेरी एनालिसिस है कि जनरली गेट एग्जाम में जब सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो 95% ऑफ द गेट एस्पिरेंट्स विल वर्क आउट प्रॉब्लम करेक्टली. देन आप 95% में होना चाहिए, नॉट 5%. यू शुड नॉट गो रॉन्ग. Deepak is almost near to the answer. I think Deepak is almost got the answer. Deepak, good. Challenge question का आंसर 18
के करीब है। ठीक है, you can do it. If you slightly put effort, you can do it. There is no difficulty at all. 18.3, 18.6, I don't remember exactly. 18 है, 18 to 18.5, something like that. अगर रेंज हम बोलेंगे 18 to 18.5, something like that. चलिए, अब हम क्या करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स जो बाकी थे पिछले क्लास के रिगार्डिंग सीपीयू शेड्यूलिंग वो कंप्लीट कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज सॉल्व करने के लिए, थोड़े बहुत इन्वॉल्व क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि यू पुट योर डेडिकेटेड एफर्ट, पुट योर हेवी कंसंट्रेशन एंड ट्राई टू वर्क आउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग दिस एज होमवर्क बिकॉज बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्ट। ठीक है, वरना ओके, जस्ट टू वार्म अप सॉल्व कर लीजिएगा ना, सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, set of process arrive at time 0, consider CPU scheduling technique shortest of first and round robin, SJF or round robin. If the time quantum is 4 milliseconds, then the absolute value of the difference between the average turnaround time of SJF and round robin. चलिए जल्दी वर्कआउट करिए एज अ वार्म अप प्रॉब्लम। अपने वार्म अप करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। SJF राउंड रॉबिन गैंट चार्ट बनाइए, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल के एब्सोल्यूट डिफरेंस बता दीजिएगा। दैट्स इट। कम ऑन, यू शुड वर्क आउट फास्ट। अराइवल टाइम इज 0, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऑल प्रोसेसेस अराइव एट द सेम टाइम, PYQ है, 2 मार्क्स, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ये, नैट। SJF का एवरेज टर्न अराउंड टाइम 10 है, am I right? बोलिए। SJF से मैंने किया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम मुझे आया है 10, इज इट करेक्ट? 10.5। अच्छा 42 आ रहा है ये, 21 + 3 44 45 46, हाँ 52। अच्छा 40 लिखा मैं। थर्टी 34 35 36 42 10.5। ठीक है, SRTF का गैंट चार्ट बना लीजिएगा। SRTF और SJF दोनों सेम हो गए, राइट? बोलिए सेम हो गए ना? whether I say SJF or whether I say SRTF, will it both be same or not? Answer me. Both of them will be same or not for this data set? Yes. Why will it be same? बोलिएगा मुझे।
Why will it be same? हाँ, because arrival time is 0. सभी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम 0 है, इसीलिए एसजेएफ और एसआरटीएफ सेम होगा, राइट? एंड सम पीपल वर हैविंग डाउट्स एंड दे वर आस्किंग मी कि सर अगर एसआरटीएफ और एसजेएफ क्वेश्चन में दिया गया और प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं बोला गया तो कन्वेंशन क्या है? डिफॉल्ट कन्वेंशन सुनिएगा, एसआरटीएफ बाय डिफॉल्ट इज प्रीएम्प्टिव. SRTF by default is preemptive always, and SJF by default is non preemptive. अगर हम SJF बोलेंगे तो नॉन प्रीएम्प्टिव है, SRTF बोलेंगे तो प्रीएम्प्टिव है. बाय डिफॉल्ट ये कन्वेंशन है, हमेशा याद रखिएगा. तो चलिए यहां पर तो सेम होगा. सबसे पहले कौन रन होगा? अच्छा, SRTF तो SJF तो हम तो किए हैं, अब हमें राउंड रॉबिन से वर्क करना है. अभी हम राउंड रॉबिन से वर्क करना है. So first who will run, assuming in the same order they are there in the ready queue, P1. P1 will run for 4 units, preempt. Followed by P2 will run for 4 units, 8, preempt. P3 will run for 2 units, 10, completed. P4 will run for 4 units, complete at 14. This will be followed by P1 again, completing at 18. And then P2 completing at 21. That's it. इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ बच्चों, बोलिएगा? 15.75. ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 15.75. 15.75 माइनस दिस, so 5.25. एब्सोल्यूट डिफरेंस. सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैटर ऑफ कंप्यूटेशन है. चलिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, डायरेक्ट प्रॉब्लम है. हाँ, अब ये एक चैलेंज क्वेश्चन लेकर आया हूं. इसे मैं बोलूंगा पोटेंशियल गेट क्वेश्चन. पोटेंशियल गेट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. मैं चाहूंगा पहले आप एक बार रीड करो क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज नॉट गैल्विन और टेनेनबाउम और स्टारिंग, सम अदर टेक्स्ट बुक. एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वैसे कई टेक्स्ट बुक्स है स्टैंडर्ड. एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उसके एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, और या सॉल्व प्रॉब्लम है वो टेक्स्ट बुक में, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर आया हूं आपके लिए. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस कुड बी ए पोटेंशियल गेट क्वेश्चन. Response time of process request. Okay, response time of process request. If you remember and recollect, I said there are two types of response time. दोनों का डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना होगा. एक है रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस और दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट. दोनों में फर्क है. डोंट गेट कंफ्यूज. मेनी पीपल डू नॉट नो दिस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड इनवेरिएबली दे विल गो रॉन्ग. तो आपको इंटरनेट पे अगर आप जाके वीडियोस देखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ये फॉलो कीजिएगा जो मैं यहाँ कह रहा हूँ. जो इंटरनेट पे डेफिनेशंस है, इंटरनेट पे जो फॉलो करते हैं लोग, वो रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट. दोनों में फर्क है. व्हाट इज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखा था. व्हाट इज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस? द डिफरेंस ऑफ व्हाट? द फर्स्ट scheduling time minus arrival time of the process.
ये है फॉर्मूला फॉर रिस्पांस टाइम. हैव यू सीन दिस ऑलरेडी? बोलिए. फॉर शेड्यूलिंग टाइम, जिस टाइम पर प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है टू द टाइम व्हेन इट अराइव, दैट इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम. द रिस्पांस टाइम ऑफ प्रोसेस. अब सर यहां पर बात हो रही है रिस्पांस टाइम ऑफ प्रोसेस रिक्वेस्ट. ये क्या है? ये क्या भला है रिक्वेस्ट? तो सुनिए, ए प्रोसेस, यहां पर नोट लिख रहा हूं मैं, ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम may be associated with several requests. Then यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. then response time of process request is equal to time of admitting the request. request कब admit हुई? time of admitting the request to the time it generates its result or response. राइट? मैं यहां पे स्टार मार्क करके यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. Look at that. Time of admitting the request to the time it generates its response or result by executing on CPU. फिर से कह रहा हूं, a process during its lifetime may be associated with several requests. कई requests हो सकते हैं process के. Then response time of process request is nothing but the time of admitting that corresponding request. किस time पर request admit हुआ और किस टाइम पर उसका रिजल्ट जनरेट हुआ बाय रनिंग इट ऑन द सीपीयू. मतलब रिक्वेस्ट को टाइम लगेगा सीपीयू पर रन होकर रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. यह है रेस्पॉन्स टाइम ऑफ रिक्वेस्ट. रिजल्ट जनरेट हुआ बाय रनिंग इट ऑन द सीपीयू. मतलब रिक्वेस्ट को टाइम लगेगा सीपीयू पर रन होकर रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. यह है रेस्पॉन्स टाइम ऑफ रिक्वेस्ट. किस टाइम पर उसका रिजल्ट जनरेट हुआ बाय रनिंग इट ऑन द सीपीयू. मतलब रिक्वेस्ट को टाइम लगेगा सीपीयू पर रन होकर रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. और किस टाइम पर उसका रिजल्ट जनरेट हुआ बाय रनिंग इट ऑन द सीपीयू. मतलब रिक्वेस्ट को टाइम लगेगा सीपीयू पर रन होकर रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. यह है रेस्पॉन्स टाइम ऑफ रिक्वेस्ट. सर इसका एक एग्जांपल लेके बता दीजिएगा तो आसानी होगी. ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता देंगे, रियलिस्टिक एग्जांपल लेके बता देंगे. देखिए, दिस इज योर ब्राउजर. This is your browser. This is the address bar of the browser. In the address bar, you type some URL www.abc.com. ठीक है? Then what happens? कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, रिजल्ट आएगा वेब सर्वर से. तो यहां पर सारा का सारा वेब पेज डिस्प्ले हो गया. ये आपका वेब पेज डिस्प्ले होगा. This is your web page. ठीक है. The web page may contain several hyperlinks. आपको पता होगा the meaning of hyperlinks. Hyperlink पता है? What is a hyperlink? ठीक है ना? Highlighted text which is associated with some content. Hyperlink. ये hyperlinks है. So boys and girls, please understand that these hyperlinks on the web page. This hyperlink is like a request. ये एक request की तरह है. So many requests are associated with the process. Your web page is a process. तो मान लीजिए if I click any hyperlink, I am clicking this hyperlink, और इसका कंटेंट डिस्प्ले होगा और एक वेब पेज में पॉपअप विंडो.
ठीक है, इसका रिजल्ट। तो द टाइम आई क्लिक, दैट इज एडमिटिंग द रिक्वेस्ट, टू द टाइम इट गोज टू द वेब सर्वर, कंप्यूटेशन होगा, रिजल्ट आएगा और यहां पे जब डिस्प्ले होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम। Time of submitting the request, clicking, to the time it goes to the web server, computation hoga web server par, you imagine like computation going on, and it starts sending the result and displaying in this window. That is the response time of the process request. Again, after some time you click this, again the same thing. Different requests will have different response time. और एक एग्जाम्पल लेंगे, आपका एग्जाम्पल लेंगे रियलिस्टिक, like this is a virtual class. I ask a question to the class, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्लास में, asking the question and completing is request, is my request. तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हूं मैं क्लास को, स्टूडेंट्स को, then I said that whoever gives the response first will be rewarded. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, that the moment I complete my sentence, the moment I complete my question, that is completing my request, फिर आप कंप्यूट करोगे, then whoever, whichever student give me the first response, first result, that is called response time of the request. ये है response time. So response time of process is different, response time of process request is different. दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है. Read it. A response process during its lifetime may be associated with several requests. Response time of process request is equal to time of admitting the request to the time it generates its response by executing on CPU. मतलब हर रिक्वेस्ट अपना एक एग्जीक्यूशन टाइम रखेगा, कितना एग्जीक्यूट होना पड़ेगा उसे सीपीयू पर टू जनरेट द रिस्पांस. रिस्पांस तभी जनरेट होगा जब वो सीपीयू पर रन होगी रिक्वेस्ट, तब जब रिस्पांस जनरेट होगा. Not that like earlier time when it get on to CPU, that was response time of process, that's it. वो अलग है, ये अलग है. बोलिए, is it clear now? Is the difference between response time of process and response time of process request clear? Okay. तब हम ये क्वेश्चन अब फिर से एक बार रीड करना होगा, हमें फिर से एक बार रीड करना होगा. सुनिएगा आप. Consider a system using round robin scheduling with 10 processes, 10 processes, all arriving at time 0. हाँ, each process is associated with 20 identical requests. हर process में 20 requests है. Each process request consume, look at this, each process request consume 20 millisecond of time. काहे के लिए? To generate its response naturally. After मतलब वो response generate करने के बाद 20 millisecond CPU पे complete करने के बाद जब उसका response generate हो जाएगा, फिर process क्या करेगा? It spends 10 millisecond of time on IO. Process 10 millisecond IO पे जाएगा. Thereafter उसके बाद initiates, process initiates subsequent request, next request. फिर next request 20 मिलीसेकंड रन करेगा, रिस्पांस जनरेट करेगा, फिर आईओ पे जाएगा, फिर next request. ऐसे कितने रिक्वेस्ट है बेटा? 20 रिक्वेस्ट. Assuming scheduling overhead of 2 milliseconds and time quantum of 20 millisecond. ठीक है, delta scheduling overhead 2, time quantum 20 milliseconds. Question is, what is the response time of the first request of the first process? Response time of the first request of the last process. पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो एक मैं थोड़ा सिनेरियो डेवलप करूंगा यहां पर, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद मुझे आपने आंसर देना है. ठीक है, सुनिएगा. This is ready queue. This CPU. ठीक है, I have 10 processes, P1, P2, P10. Initially at time 0, all processes are there in the ready queue with their first request. तो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा. What is the admission time? What is the admission time of the first request of each process? Come on.
जीरो है ना, एट टाइम जीरो पर हर प्रोसेस की फर्स्ट रिक्वेस्ट अवेलेबल है, एडमिशन टाइम जीरो है। अब जीरो से लेके किस टाइम पे वैसे शेड्यूल होगा, 20 मिली सेकेंड रन करेगा, फिर जनरेट करेगा रिजल्ट, फिर जनरेट करेगा रिजल्ट, वो है रिस्पॉन्स टाइम। तो आपने ज्ञान चार्ट बनाना होगा। सुनिए, CPU, imagine we are CPU in horizontal direction for execution, टाइम जीरो। सबसे पहले क्या होगा बताइएगा, नाउ कम ऑन, यू शुड आंसर मी, फर्स्ट क्या होगा? टाइम जीरो, ओवरहेड डेल्टा, वेरी गुड, 2 मिली सेकेंड। कौन रन करेगा? P1 रन करेगा। P1 फर्स्ट रिक्वेस्ट, टाइम क्वांटम कितना है सर? 20 है। रिक्वेस्ट टाइम कितना है? 20 है। तो P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? 20 यूनिट्स, मतलब 22। क्या 22 पर P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? बोलिए हाँ बिल, नो राशिद, परसेंटेज इज सही, नो। एट टाइम 22 फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1 का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, नहीं हो गया? बोलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Each process request take 20 millisecond of time. Process P1 की first request also need, all these need 20 millisecond of time. And it has run for 20 millisecond time. क्यों? Time quantum 20 है, ठीक है? It has run 20 millisecond. तो मतलब यहाँ पे request था available, so it has executed that request, generated the response. So answer for the first question. Answer for the first question. This is 22 milliseconds. क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर? Response time, this is the response time of process P1 first request. ठीक है ना, ओके ना, नाउ ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू। P1 विल गो फॉर IO, यहां पर P1 जाएगा IO के लिए। सर कितने टाइम के लिए IO जा रहा है? कितना है भाई? स्पेंड्स 10 मिलीसेकेंड्स ऑफ टाइम, 10 मिलीसेकेंड्स। मतलब IO इसका कब कंप्लीट होगा? 32 पे कंप्लीट होगा। 22 + 10 32। लेकिन CPU पे क्या होगा? अदर प्रोसेसेस आर देयर, राउंड रॉबिन है, तो यहां पर होगा डेल्टा 24, P2 फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम क्वांटम 20, 44। तो दिस इज द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P2 फर्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? दिस रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P2 फर्स्ट रिक्वेस्ट। फिर P2 IO पे जाएगा, फिर P3 रन करेगा, फिर P4 रन करेगा। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हो। व्हाट इज आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन? क्या है? रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेस, मतलब 10th प्रोसेस का फर्स्ट रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ये बताइए। 10th प्रोसेस मान लीजिए यहां शेड्यूल हुआ है, 10th प्रोसेस यहां शेड्यूल हुआ है, डेल्टा P10 फर्स्ट रिक्वेस्ट, ये है रेस्पॉन्स टाइम। ये आंसर देना है आपको, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हाँ राशिद, बी केयरफुल। सी दिस साइकिल, ये जो साइकिल है 2 + 20 की साइकिल है। 2 + 20, 2 + 20, 2 + 20, 2 + 20, 2 + 20 फॉर 10 प्रोसेसेस। तो ये बनेगा 10 × 2 + 20 इज इक्वल टू 220। दैट्स इट, 220। बोलिएगा सभी को क्लियर है? एनी डाउट? Prakhar, you only tell me what you are telling is right or wrong. You only tell me right or wrong, Prakhar. अरे बाबा कैसा, you apply the definition, how can you say it is right? What you are telling is totally wrong thing. Process response time is the time when it gets on to CPU first, and completion time of a particular process will be equal. कैसे होंगे completion?
P1, when is it going to? Response time of P1 is 2 milliseconds. Response time of process P1 is 2 milliseconds. Are you getting? Response time of process P1 is 2 milliseconds. And when will P1 complete? P1 will complete after 10 requests, maybe very, very long time. How can both be same? Apply common sense. If you ask response time of process P1, it is 2 milliseconds. Response time of process P2 is 24 milliseconds. I hope you are understanding. P1, it is 2 milliseconds, very, very long time. How can both be same? Apply common sense. If you ask response time of process P1, it is 2 milliseconds. Response time of process P2 is 24 milliseconds. I hope you are understanding. ये क्लियर है यहां तक? Are you getting? Process will be equal. कैसे होंगे? Completion. P1 totally wrong thing. Process response time is the time when it gets on to CPU first, and completion time of a particular process will be equal. कैसे होंगे? Completion. P1, when is it going to? Response time of P1 is 2 milliseconds. Response time of process P1 is 2 milliseconds. Are you getting? Response time of process P1 is 2 milliseconds. And when will P1 complete? P1 will complete after 10 requests, maybe very, very long time. How can both be same? Apply common sense. If you ask response time of process P1, it is 2 milliseconds. Response time of process P2 is 24 milliseconds. I hope you are understanding. ये क्लियर है यहां तक? प्रोसेस होगा कितना? ठीक है, 2 milliseconds the response. 20 सेकंड of रन करेगा, P1 रन करेगा. P1 फर्स्ट रिक्वेस्ट. टाइम क्वांटम कितना है सर? 20 है. रिक्वेस्ट टाइम कितना है? 20 है. तो P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? 20 यूनिट्स, मतलब 22. क्या 22 पर P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? बोलिए. हाँ बिल नो. राशिद, प्रसन्नजीत जी सही. नो. एट टाइम 22 फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1 का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? नहीं हो गया? बोलिए. Come on. Each process request take 20 millisecond of time. Process P1 की first request also need, all these need 20 millisecond of time. And it has run for 20 millisecond time. क्यों? Time quantum 20 है. ठीक है? It has run 20 millisecond. तो मतलब यहाँ पे request था available, so it has executed that request, generated the response. So answer for the first question. This is 22 milliseconds. क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर? Response time, this is the response time of process P1 first request. ठीक है ना? ओके ना? नाउ ठीक है. अब देखिए इसके बाद क्या होगा? टाइम ऑफ फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम कितना है? 20 है. तो P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? 20 यूनिट्स, मतलब 22. क्या 22 पर P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? बोलिए. तो P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? 20 यूनिट्स, मतलब 22. क्या 22 पर P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? बोलिए. है. तो P1 कितना टाइम के लिए रन करेगा? 20 यूनिट्स, मतलब 22. क्या 22 पर P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया? बोलिए. हाँ बिल नो. राशिद, प्रसन्नजीत जी सही. नो.
एट टाइम 22 फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस P1 का रिस्पॉन्स जनरेट हो गया नहीं हो गया, बोलिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट टेक 20 मिलीसेकंड ऑफ टाइम। प्रोसेस P1 की फर्स्ट रिक्वेस्ट आल्सो नीड, ऑल दीज नीड 20 मिलीसेकंड ऑफ टाइम एंड इट हैज रन फॉर 20 मिलीसेकंड टाइम। क्यों? टाइम क्वांटम 20 है, ठीक है, इट हैज रन 20 मिलीसेकंड। तो मतलब यहां पे रिक्वेस्ट था अवेलेबल, सो इट हैज एग्जीक्यूटेड दैट रिक्वेस्ट, जनरेटेड द रिस्पांस। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 22 मिलीसेकंड्स। क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर? रिस्पांस टाइम, दिस इज द रिस्पांस टाइम ऑफ प्रोसेस P1 फर्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है ना? ओके ना? नाउ ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू। P1 विल गो फॉर IO, यहां पर P1 जाएगा IO के लिए। सर कितने टाइम के लिए IO जा रहा है? कितना है भाई? स्पेंड्स 10 मिलीसेकंड्स ऑफ टाइम, 10 मिलीसेकंड्स। मतलब IO इसका कब कंप्लीट होगा? 32 पे कंप्लीट होगा। 22 + 10 32। लेकिन CPU पे क्या होगा? अदर प्रोसेसेस आर देयर, राउंड रॉबिन है, तो यहां पर होगा डेल्टा 24 P2 फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम क्वांटम 20 44। so this is the response time of P2 first request, ठीक है, this is the response time of P2 first request। फिर P2 IO पे जाएगा, फिर P3 रन करेगा, फिर P4 रन करेगा। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बता सकते हो। व्हाट इज आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन? क्या है? रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेस, मतलब 10th प्रोसेस का फर्स्ट रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, ये बताइए। 10th प्रोसेस मान लीजिए यहां शेड्यूल हुआ है, 10th प्रोसेस यहां शेड्यूल हुआ है, डेल्टा P10 फर्स्ट रिक्वेस्ट, ये है रेस्पॉन्स टाइम। ये आंसर देना है आपको, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। हाँ राशिद, बी केयरफुल। सी दिस साइकिल, ये जो साइकिल है 2 + 20 की साइकिल है। 2 + 20 2 + 20 2 + 20 2 + 20 2 + 20 फॉर 10 प्रोसेसेस। तो ये बनेगा 10 × 2 + 20 = 220। दैट्स इट, 220। बोलिएगा सभी को क्लियर है? एनी डाउट? Prakhar, you only tell me what you are telling is right or wrong. You only tell me right or wrong, Prakhar. अरे बाबा कैसा, you apply the definition, how can you say it is right? What you are telling is totally wrong thing. Process response time is the time when it gets on to CPU first, and completion time of a particular process will be equal. कैसे होंगे completion? P1, when is it going to? Response time of P1 is 2 millisecond. Response time of process P1 is 2 millisecond. Are you getting? Response time of process P1 is 2 millisecond. And when will P1 complete? P1 will complete after 10 requests, maybe very, very long time. How can both be same? Apply common sense. If you ask response time of process P1, it is 2 millisecond. Response time of process P2 is 24 millisecond. I hope you are understanding. ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? नो डाउट्स ना? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम गोना गिव यू सम टाइम फॉर हाँ बोलिए शिवम, व्हाट इज द डाउट? वुड यू लाइक टू स्पीक? अब एक डाउट है बोल के आप लिख के छोड़ देंगे, अब मैं कब तक वेट करूंगा?
हाँ बोलिए, क्या डाउट है, बोलिए शिवम। एक ही प्रोसेस होता और इनिशियली उसको 10 यूनिट का सीपीयू चाहिए, फिर 10 यूनिट का आईओ चाहिए, फिर इसके बाद फिर से 10। It is not getting connected. हेलो Are you हेलो able to? सर, हेलो सर, एम आई I ऑडिबल? cannot hear you. सर एम आई ऑडिबल नाउ? Okay. Write down in chat box. Shishti has joined late today, but I could not hear Shivam. Okay. Now listen to me. So Rashid, one doubt in question. Each process has 20 requests. Yes, 20 requests. This is the end of first request of P1. अब next request के लिए मैं question में आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? Next question के लिए मैं question में यहाँ पर आ रहा हूँ. अच्छा, now I think my sound is off here. Sorry, speaker is off. Shivam, you try now once, just once. Shivam, speaker was off for me. You try now. Suppose there is a process. Tell me. It requires initially 10 units of CPU. Who? A process, single process. No. Read the question again. No, sir, I'm asking a hypothetical doubt. Hypothetical doubt. Tell me. So a process requires 10 units of CPU initially, then 10 units of Does, IO. is it the process or is it the process request? Sir, it is a process request, single request. Single request need 10 millisecond of CPU time. Fine. Yes. Then 10 units of IO time. Okay. Then 10 units of CPU time again. Okay. So, sir, will the No, I response? mean, see that later 10 minutes, 10 millisecond of CPU time, is it a next request or what? No, sir, in the same request. Same. No, request is only for CPU computation, not for IO, unless and until you are defining a request in your own way. Okay, sir. You will have to define the request how it is. Okay, sir. So Are you getting your point? okay, sir. You have So to define. That's what I'm saying. How request is defined. Like in this question, it is very clearly defined. In this question, look at me. In this question, it is very clearly defined. Each process request, first point,
each process has 20 requests and each process request consume 20 millisecond of CPU time for what? To generate the result. After that, after the result is generated, it spent 10 millisecond of time on IO. After that initiate, that means when 10 millisecond of IO is over, then second request start for the process. That is the meaning. So like that, you have to also tell how your request is. Yes. After CPU request, it goes for IO. Right. Now, boys and girls, if everything is okay, we will go for the third question of this. That is very, very interesting and very important, and very few students could answer it. बहुत थोड़े स्टूडेंट सही आंसर दे पाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं. सुनिए, व्हाट इज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द सब्सीक्वेंट. सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है? नेक्स्ट. सब्सीक्वेंट का मतलब है नेक्स्ट. नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑफ एनी प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस की नेक्स्ट रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा? मतलब अब देखिए, यहां पर आपको थोड़ा हिंट देके छोड़ूंगा, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है. मैं 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, आप वर्कआउट कीजिएगा. P1 completed its request, generated the response at 22 मिलीसेकंड. इसके बाद P1 ने IO के लिए गया. ये IO टाइम है, whatever time it spent. 32 पर क्या होगा बोलिएगा? Write down in chat box what will happen at 32 when P1 complete IO. What will happen to P1 when it complete IO at 32? It will go into ready queue and place itself in the ready queue after P10. और हम यहां लिखेंगे P1 second request. P1 की सेकंड रिक्वेस्ट एडमिट हो रही है किस टाइम पर? बोलिए, किस टाइम पर P1 की सेकंड रिक्वेस्ट एडमिट हो रही है? 32 मिलीसेकंड पर, नॉट 0. IO कंप्लीट होने के बाद देर आफ्टर सेकंड रिक्वेस्ट जनरेट हुई 32 मिलीसेकंड. इसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है? ये क्वेश्चन है. इसका सेकंड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम क्या है? चलिए, मैं हिंट दे दिया हूं. यू वर्कआउट एंड लेट मी नो द आंसर. आई विल गिव यू 2-3 minutes of time. Come on, everybody, do it. Do not be in a hurry. Do not be in a hurry to tell the answer. Workout कीजिए, सोच समझ के. Immediately कुछ भी लिख देंगे ऐसा बोर्ड के चैट बॉक्स में, ऐसा नहीं चलेगा. वर्कआउट कीजिएगा, वर्कआउट करिए, सोचिए. अच्छा, it won't come so easily, I'm telling you. Total burst time will be how much? Each process का burst time कितना? Clarity 222. इतना क्लियर बोलने के बाद तो आंसर आ जाना चाहिए था. I have told with much clarity. 210, 222. Each Aryan is asking each process का burst time कितना है? आपको burst time यहां पर कोई मीनिंग नहीं रखता है आर्यन. Each process का burst time, total burst time will be how much? 20 request, each request take 10 milliseconds of 20 milliseconds of time. तो 20 into 20, उसका जो burst time की अगर आप बात कर रहे हो तो 20 into 20 400 होगा. Total burst time of the process is 400. क्या करोगे आप? 400 का क्या करोगे? What will you do? It's of no use here in this question. Total burst time of process का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर. Understanding the question is the first problem. सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन. सुनिएगा, एवरीबॉडी प्लीज फॉलो. एवरीबॉडी प्लीज फॉलो. So process request P1 second request is starting at time 32. 32 से लेके time when it get onto CPU, time when it get onto CPU. CPU पे कब आएगा P1? P10 के बाद आएगा. P10 के बाद कैसे आएगा? Again with 2 plus delta 2, फिर P1 second request कितने टाइम के लिए रन करेगा? फिर वही 20 मिलीसेकेंड्स, 20 मिलीसेकेंड्स, राइट? ये रन करेगा 20 मिलीसेकेंड्स के लिए. तो ये होगा रेस्पॉन्स टाइम ऑफ सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट. ऐसे लिखेंगे हम, सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट. तो यहां पर है. तो ये ड्यूरेशन आपने डिटरमिन करना है यहां से लेके यहां तक. इज इट नॉट? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके 32 से लेके यहां तक का ये जो ड्यूरेशन है, ये है रेस्पॉन्स टाइम.
ये है रिस्पांस टाइम। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, ये ड्यूरेशन निकालने के लिए बहुत सिंपल अप्रोच तो ये है, सिंपल अप्रोच तो ये सुनिएगा, बहुत सिंपल अप्रोच तो ये है, राइट? सुनिए, मैं मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। टाइम व्हेन P1 वेंट फॉर IO, यहां से लेके देखिएगा, फ्रॉम हियर टिल हियर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? एनीबॉडी? ये लाइन वायलेट कलर की जो लाइन उतार रहा हूं मैं, वायलेट कलर की जो लाइन उतार रहा हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? देखिए, P1 एंड हो गया 2+20 की साइकिल। अब यहां से एक आप 2+20 की साइकिल लीजिएगा, 2+20 की साइकिल, यहां से P2, then P3, then P4, then P5, then P6, then P7, then P8, then P9, then P10, फिर P1, फिर P1, 2+20 की साइकिल, मतलब 10 प्रोसेसेस की है ये। 10 into 2+20, 220। द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट विथ Y9, then P10 +20 की साइकिल लीजिएगा, 2+20 की साइकिल, यहां से P2, then P3, then P4, then P5, then P6, then P7, then P8, then P9, then P10, फिर P1, फिर P1, 2+20 की साइकिल, मतलब 10 प्रोसेसेस की है ये। 10 into 2+20, 220। The length of this segment with violet ink is 220. Correct? The length of this segment with violet ink is 2+20। कैसे? 2+20 की एक साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम P2 अप टू P10, 9, ये 10, 10 into 2+20, 220 की है साइकिल। प्रसन्नजीत, 220। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, एक रेड कलर से मार्क कर रहा हूं मैं, फ्रॉम P1 टिल दिस 32, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट? ये आईओ का टाइम है, कितना है, कितना है? नो नो नो, हाँ ये कितना है? फ्रॉम P1 स्टार्टिंग 22 टू 32, 10 मिली सेकेंड। आईओ का टाइम है 10 मिली सेकेंड। तो ये वायलेट लाइन इज 220, दिस इज 10। तो मतलब आपका येलो कलर का जो लाइन है रिप्रेजेंटिंग द रिस्पांस टाइम will become how much? Will become 210, will become 210। response time of the subsequent request of process P1, and like that for any other process will be 210। is it clear everybody? सुनिएगा, यहां पे देखिए, आप आराम से देखिए, P1 की साइकिल 2+20 पे हो गई, यहाँ पे P2 की साइकिल है। तो यहां से जब P2 की साइकिल स्टार्ट हो रही है टिल एंड ऑफ P1 सेकेंड रिक्वेस्ट 10 प्रोसेसेस है, तो 10 into 2+20, मतलब ये लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन इज 220, लेंथ ऑफ दिस इज 10, तो मतलब ये डायरेक्टली हुआ जो रेस्पॉन्स टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड प्रोसेस है वो 210 होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, third question is, so this was 220, the answer for the third question is 210। so this is one of the challenge question, one of the beautiful question, potential gate question। ये basis पर gate में question आ सकता है, so please mind it, understand it thoroughly, conceptually। can I make a slight variation to this? आप आंसर करोगे if I slightly vary this? are you ready? ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको एक वेरिएशन दे रहा हूं ये क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन आपने ओरली आंसर देना है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर ओरल देना है। सेम क्वेश्चन, प्रोसेस, ईच प्रोसेस हैज 20 आइडेंटिकल रिक्वेस्ट, सेम आइडेंटिकल रिक्वेस्ट, ईच रिक्वेस्ट कंज्यूम 20 milliseconds of CPU time, and after that it will go for IO operation for 10 milliseconds। ये सब सही है, वही है। then thereafter subsequent request is generated। हमने पिछले क्वेश्चन में माना था कि राउंड रॉबिन यूज करते हुए टाइम क्वांटम वाज 20 मिलीसेकेंड, अब हम टाइम क्वांटम विल बी 10 मिलीसेकेंड, रिड्यूस कर रहे हैं हाफ, एंड शेड्यूलिंग ओवरहेड डेल्टा इज 2 milliseconds। टाइम क्वांटम इज reduced to half, 10 milliseconds। don't get confused, don't be in a hurry to answer।
Think well and answer. Think well and answer. What is the answer for the question 1? Response time of first request of P1. बोलिए, आंसर बोलिए. उसी तरह क्वेश्चन 2, response time of first request of process 2, process 10, sorry, process 10. बोलिए. जब आप गैंट चार्ट बनाओगे यहां पर, first process P1 percentage, why will it be 152? Why will it be 152? See on board. CPU starting at 0 delta 2 P1 run for 10 millisecond. 10 मतलब ये 12 होगा. Can I say is this the response time? No, because process first request has run only for 10 millisecond. अभी उसके और 10 millisecond बाकी है. अभी और उसके 10 millisecond बाकी है. Is it not? So when will it get a chance? After P10 delta P10 यहां पर होगा delta. First request has run only for 10 millisecond. अभी उसके और 10 millisecond बाकी है. अभी और उसके 10 millisecond बाकी है. Is it not? So when will it get a chance? After P10 delta P10 यहां पर होगा delta P1 first request. ये है response time. तो 2 plus 10 की साइकिल रिपीट हो रही है 10 प्रोसेसेस के लिए, प्लस लास्ट में फिर 2 plus 10 फॉर P1. 2 plus 10. ये है रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द फर्स्ट रिक्वेस्ट 132 मिलीसेकंड. अगर आप 12 बोलोगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रोसेस ने सिर्फ 10 मिलीसेकंड कंप्यूट किया है और 10 मिलीसेकंड बाकी है उसके. उसी तरह लास्ट प्रोसेस का क्या होगा? 2 plus 10 फॉर 10 फर्स्ट साइकिल, अगेन 2 plus 10 सेकेंड साइकिल में 10 प्रोसेसेस, मतलब 12 into 10 120 plus 120 240. Response time, second question. This is first question. And क्या होगा? 2 plus 10 for 10 first cycle, again 2 plus 10 second cycle में 10 processes, मतलब 12 into 10 120 plus 120 240. Response time, second question. This is first question. Plus 12 बोलोगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रोसेस ने सिर्फ 10 मिलीसेकंड कंप्यूट किया है और 10 मिलीसेकंड बाकी है उसके. उसी तरह लास्ट प्रोसेस का क्या होगा? 2 plus 10 फॉर 10 फर्स्ट साइकिल, अगेन 2 plus 10 सेकेंड साइकिल में 10 प्रोसेसेस, मतलब 12 into 10 120 plus 120 240. Response time, second question. This is first question. समझ गए? Is the concept clear? Third question, same thing. Subsequent request का response time as a homework try कर लीजिएगा based on the discussion that we made earlier. यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो बेसिस पर आप खुद subsequent request का कैलकुलेट कर लीजिएगा. This is homework. ठीक है? You can do that. If this is okay, then we can go to the next question of textbook. टेक्स्टबुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है.
the hell? What the hell? How did it records my voice? हेलो हेलो कैसे अच्छी भाई मेरा प्लेलिस्ट रिवील हो गया Hmm.
Choose सारा कुछ प्लस so add has no effect.
ज्यादा ही लोग ज्वाइन हो गए। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना अपना। मतलब इधर क्या होता है मुझे Hey, PO you can go through that welcome and rules वाला सेक्शन में, ठीक है? हाँ, ठीक है। गाइस स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। हाँ विजिबल है। चलो ठीक है। सो प्रॉब्लम यार मैं एक बार क्विकली समझा देता हूँ। आज हो गया 48 हो गया ना, ठीक है। सो प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव वन एरे, most probably any random array, okay, like a1 a2 so on till an, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई सा भी ith इंडेक्स चूज करेंगे और a1 से लेके a2 टिल 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 ai तक सारी वैल्यूज पे ना +1 कर देंगे एंड ai +1 ai +2 टिल a of n तक। लेट्स सपोज द साइज इज n, हम लोग सारी वैल्यूज पे -1 कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं एक बार। एक कुछ भी एरे देते हैं 1 3 5 8 10, ठीक है। अपने आई वैल्यू 0 1 अलग कलर से लिखते हैं 2 3 4। लेट्स सपोज मैंने आई इज इक्वल्स टू 2 लिया, ठीक है। तो a1 से लेके ai तक जो वैल्यू है, मतलब ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था और अभी हम यहाँ पे 0 बेस्ड ले रहे हैं। सो a0 से लेके a2 तक सारी वैल्यूज पे ना +1 हो जाएगा। 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6, ठीक है। और जो बाकी की वैल्यूज है i +1 से लेके n तक, उन सब में -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9। ये होता है एक ऑपरेशन, ठीक है, कि कोई सा भी आई चूज करो और ऐसा कर दो। अब तुम्हें ये बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जिससे एरे नॉट सॉर्टेड हो जाए। और सॉर्टेड की डेफिनेशन दे रखी है कि इट्स लाइक जो a1 है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए a2 से, a2 छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए a3 से, एंड सो ऑन। ये सॉर्टेड की डेफिनेशन होती है और ये सबको पता ही है, राइट। अब इस केस में ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कौन सा आई चूज करें, ताकि हम लोग को मिनिमम फाइंड करना है ना कि मैक्सिमम, करेक्ट। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 10 20 50 51 80 एंड 120 चूज करना सबसे बेस्ट रहेगा ताकि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो पाए। कैन आई चूज दिस i is equals to 4? कोई बोल रहा था सेकंड इंडेक्स चूज या करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ना बहुत कम है। बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम लोग है ना ये अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान लो इसको विजुलाइज करते हैं ऐसे कि लाइक 0 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है, ये 0 पे है। 1 इंडेक्स पे भी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं कुछ 1 इंडेक्स पे ऐसी वैल्यू है, ठीक है। और इंडेक्स 2 पे भी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं कुछ इस टाइप की है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। और फिर जब ये वाली वैल्यू है थर्ड इंडेक्स पे, ये कुछ बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इन लोग का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फिर फोर्थ पे और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई। तो बेसिकली जो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस है ना बिल्डिंग्स का, अगर ऐसे विजुलाइज करें तो वहीं पे ये ऑपरेशन लगाना सबसे बेटर है, क्योंकि एट द एंड हो क्या रहा है कि जहाँ पे जो भी आई है वो वाली वैल्यू बढ़ रही है +1 से, और जो i +1 है वो वैल्यू घट रही है -1 से, राइट। और आफ्टर सम टाइम ये ऑपरेशन करने के बाद ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा हो गया वैसे ये अनसॉर्टेड हो गई, ठीक है। बस हम लोग को ना
एडजेसेंट वैल्यूज में ना डिफरेंस चेक करना है। इट्स लाइक अगर एक इनपुट ले यहाँ से 1 8 10 13 1 8 10 13, इन लोग का डिफरेंस क्या है? इन लोग का डिफरेंस है 7, इन लोग का डिफरेंस क्या है? 2 है, इन लोग का डिफरेंस क्या है? 3 है। तो अब जैसे कि हम लोग एक बार ये करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं i इज इक्वल्स टू 1 पे, तो ये दोनों प्लस हो गए और ये इसको हटा देते हैं, 9 हो गया ये और ये हो गया 12। अब एक मूवमेंट में ये हुआ, एक मूव में ये हुआ, तो एक और मूव में वापस यहीं पे लगा देते, 3 10 8 एंड देन ये 11। अब ये लोग अनसॉर्टेड बन गए, दिस 2। और बाकी इस केस में ना जैसे 2 और 3 ऑलमोस्ट इक्वली हैं, क्योंकि जो उनका डिफरेंस है ना वो 2 से कम होता है। अगर आप देखो तो पहले डिफरेंस क्या था? 2 था दोनों का, अब डिफरेंस क्या हो गया दोनों का? 0 हो गया। इसलिए इवन तो अगर आप i इज इक्वल्स टू 2 भी चूज करते, जैसे ये यहाँ पे ऐसा करते हम लोग 1 8 10 13 है, जैसे हमने ये वाला चूज करा तो ये हो जाएगा 2 9 11 एंड 12 एंड देन अगेन 3 10 12 11। तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 से कम हुआ, राइट? इससे पहले डिफरेंस क्या था? 3, अब डिफरेंस क्या हो गया? 1, और अब डिफरेंस क्या हो गया? -1, करेक्ट? बस आपको मिनिमम डिफरेंस ढूंढना है, और मान लो अब मिनिमम डिफरेंस कुछ आया है, मिनिमम डिफरेंस आया है, हमने सबके एडजेसेंट वाले डिफरेंस चेक करे और मिनिमम डिफरेंस आ गया 10, तो हमारा क्या आंसर होगा? कितने नंबर ऑफ मूवमेंट्स होंगे? 10 ही होगा क्या आंसर? तो कुछ भी अपन ऑप्शन ले लेते हैं, ये 30 40 एंड 80। इस केस में मिनिमम डिफरेंस कितना है? 10 है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? Anyone? 620। 10 divided by 2 plus 1. हाँ, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, पहले डिवाइडेड बाई 2 समझते हो फिर प्लस 1 समझेंगे। डिवाइडेड बाई 2 क्यों? क्योंकि हम इसको तो बढ़ा रहे हैं +1 से, सिमिलरली हम इसको ना -1 से घटा रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो 2 से घट रहा है, इसलिए ये वाली वैल्यू पहले फिर 8 होगी, फिर ये 6 होगी, फिर 4, देन कितना? 0। 0 मतलब ये दोनों वैल्यू ना सेम हो जाएंगे, लाइक 35 और 35, और फिर हमको, लेकिन स्टिल ये लोग सॉर्टेड ही हैं, तो इसलिए हमको एक और मूवमेंट करना पड़ेगा +1, ताकि ये 36 बन जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 36 बन जाए और ये 34 हो जाए, ताकि ये अनसॉर्टेड हो जाए। सिंपल है, राइट? हम्म। और मान लो डिफरेंस अगर ऑड भी है, 11 है, तो 11 में भी क्या होगा? पहले फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 9, देन डिफरेंस 7, then 5, then 3, then 1 and then -1। तो कितने मूवमेंट हुए यहाँ पे भी? 1 2 3 6. 4 5 6। सो बेसिकली जो भी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना था? 5 और +1, 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? इंटीजर डिवीजन, 5 +1। ठीक है, सो कुछ डाउट इसमें किसी को भी? सिंपल ही था ये वाला प्रॉब्लम तो काफ़ी। सो इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप रिकॉर्डिंग इज ऑन, या ठीक है। और इनपुट्स क्या क्या है इसमें? पहले टी है एंड देन एन है और फिर एरे है। ओके, तो इन टी, और यार इसमें ना वो भी देखना पड़ेगा शायद, हाँ सी, वैल्यू ऑलमोस्ट 10:9 तक जा रही है ना, तो हमको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, बस ये मेक श्योर करना पड़ेगा थोड़ा। और यहाँ पे कॉल भी कर दो। तो ये लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं।
v of n एंड देन एक आंसर भी क्रिएट कर लो, it is equals to 0 and then this v of I. ओके, या तो देखो फिर एक और इसके बाद एक और फॉर लूप लिख सकते हैं जहाँ पे हम लोग वापस चेक करेंगे उनका एडजेसेंट का डिफरेंस, करेक्ट। बट बेटर है इसी में हम लोग अपडेट करते जाते हैं। और सिंस हमको ना v ऑफ i माइनस v ऑफ i माइनस 1 निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक इफ कंडीशन डाल रहा हूँ। इट्स लाइक इफ i इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली इट शुड रन, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना वो एडजेसेंट करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करेंगे। सो एंड डिफरेंस कितना आया, v ऑफ i माइनस v ऑफ i माइनस 1, ठीक। और आंसर में अपडेट कर देते हैं मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा डिफ डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब यहाँ पे अब बताओ क्या क्या मिस्टेक है इस कोड में। होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो बताओ क्या क्या मिस्टेक है, ऐसे स्मॉल स्मॉल मिस्टेक है ना इस कोड में। अगर इसमें अरे ऑलरेडी डिसऑर्डेड हुआ तो करेक्ट, तो उसको कैसे चेक करें यार। डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा और फिर डिफरेंस डिफरेंस नेगेटिव आ डिवाइडेड बाय जाएगा, 2। ठीक है। सो इफ आंसर इज 0 नेगेटिव then we have to print 0 only. In the else part we should print this cout. Okay, correct, एक mistake is done. Is there any other mistake? चेक करो। अगर लेकिन अपना डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 -1 आ रहा है, हाँ, तो फिर यानी कि डिफरेंस अपना नेगेटिव था लेकिन अपन ने +1 कर दिया, तो फिर वो 0 बन जाएगा। तो फिर उस केस में तो अपन ये प्रिंट कर देंगे, आंसर प्रिंट कर गुड, देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर डिफरेंस अगर डिवाइडेड बाय 2 -1 आया और फिर +1 हो गया तो हमने 0 प्रिंट कर देंगे ना। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वल्स टू लगा देते हैं, हम्म, ठीक है। और कुछ मिस्टेक है इसमें, शायद एक और भी मिस्टेक है। यस, जैसे मान लो ये वाला केस हुआ, जैसे कि ऑलरेडी अनसॉर्टेड है, जैसे कि 3 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इसमें अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, -1। और -1 अगर आया सो डिफरेंस बाय 2 कितना हो जाएगा, 0। और 0 + 1 वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको एक फ्लैग भी रख देते हैं अपन, फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। सो इफ diff is negative then make flag is equals to false, ठीक है। और यहाँ पे कर दो कि इट्स लाइक अगर फ्लैग फॉल्स है तो वो प्रिंट करो, ना कि आंसर पे चेक करने का, ठीक है। एक मिस्टेक तो ये थी। और एक और स्मॉल मिस्टेक है वाइल इनिशियलाइजिंग द आंसर वैल्यू। अगर आंसर आप 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, 0 से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो क्या होगा ना, हर बार आंसर मिनिमम ही होगा। लाइक 0 पे हर बार वो 0 0 ही रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ बिगर वैल्यू से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। इट्स लाइक 1E9 समथिंग, ठीक है। अब लेट्स रन द कोड एंड चेक। what is the issue? I guess this should be long. बाय द वे हम लोग को ना वैसे इंट को ही लॉन्ग डिफाइन कर देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से वही करेंगे। हाँ,
एक बार कोड में देख लो, कुछ डाउट है क्या, फिर हम लोग सबमिट करते हैं एवरीवन। ये वो div by 2 plus 1 हाँ ठीक है, बाय प्लस वन क्यों करा, बाय टू समझ में आया कि नहीं, कि बाय टू क्यों करा। नहीं दे वही नहीं है plus 1 plus 1 अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लो एक ऑप्शन, एक कुछ भी दे रखा है, ओके, एरे 30 ले लेते हैं और 80 एंड देन 120 ले लेते हैं, ठीक है, एक कुछ भी दे रखा है। अब बताओ इस केस में कौन से वाले इंडेक्स पर मैं अपने वो करूँ, एक्शन करूँ, लाइक जो भी मूवमेंट है, मूव है, वो वाले कौन कौन से इंडेक्स पे लगाऊं, फर्स्ट पे या सेकंड पे। फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे, करेक्ट, क्योंकि डिफरेंस 10 ही 10 है, राइट। सो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हाँ इसको 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया 19, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 10, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 50, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 40। अब मुझे ये पता है कि अगर जो भी मैं वो लगाता हूँ अपना ऑपरेशन, उससे क्या होता है कि एक वैल्यू ना +1 से बढ़ जाती है और उसकी ही नेबर वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू है, वो -1 से घट जाती है। वैसे तो जो जितने भी प्रीवियस वैल्यूज होंगे वो भी +1 से बढ़ेंगे, और जितने भी ये नेक्स्ट वैल्यू होंगे ये भी -1 से कम होंगे। बट मुझे फोकस करना है यही दोनों पे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही सबसे पहले ओवरलैप करेगा, इन दोनों की वैल्यू ही सबसे पहले ओवरलैप करेंगी, क्योंकि बाकी सब जो वैल्यूज हैं वो तो, जैसे मान लो ये कुछ भी है, ये x है और ये y है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सब y से बड़ी होंगी, राइट, इट विल बी ग्रेटर देन y, वो भी होगा ये, सॉरी, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी ये पहले, ये सब लेसर देन होंगी x से। तो अगर मैं x पे लगा रहा हूँ चूज करके, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस d है वो सबसे पहले कम होता जाएगा। इट्स लाइक पहले d, जैसे ही मैंने एक ऑपरेशन करा तो ये बनेगा 2 और ये 21, ये कम हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 79 और ये 119। इनका पहले डिफरेंस था 10, राइट, क्या, ओके, अब इनका डिफरेंस क्या हो गया है, 9 - 1 8, करेक्ट, पहले 10 था अब 8 हो गया है। अब एक और बार अगर हम लोग सेम ऑपरेशन लगाएंगे तो डिफरेंस 6 हो जाएगा, 6 क्योंकि ये 22 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, 28 - 22, करेक्ट। तो ये डिफरेंस को अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें, सबसे पहले 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर अब होगा 4, फिर होगा 2 और फिर होगा 0, करेक्ट। और अगर वैल्यूज की भी बात करें, वैल्यूज कैसे जा रही होंगी, वैल्यूज कैसे जा रही होंगी, 22 है, 23 होगा, 27 एंड सो ऑन, ये लोग 25 पे मिल जाएंगे आई गेस, करेक्ट। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी जो 25 से छोटी होंगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी जो 25 से बड़ी होंगी, राइट, 25 से बड़ी होंगी, और यहाँ पे वैल्यूज 25 से छोटी होंगी। अब जब मैं एक और ऑपरेशन लगाऊंगा, ये अभी टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, operations 5 हुए ना आई गेस, 5 right 5 5 हुए ना। और ये 5 कैसे आया, ये 5 कैसे निकला मेरा, दिस इज नथिंग बट 10/2, 10/2, क्योंकि अगर तुम विजुलाइज करो कि, इट्स लाइक इमेजिन करो कि अगर डिफरेंस 20 होता मैक्सिमम, तो 20 के बाद क्या होता, 18, 16, 14 एंड सो ऑन टिल 0। सो दिस 5 इज नथिंग बट डिफरेंस बाय 2, right ओके। बट हमने अभी वैल्यू वाइज नोटिस करा कि इट्स लाइक अभी भी जो वैल्यूज हैं वो दोनों तो इक्वल है, इट्स लाइक मतलब भी स्टिल जो ये एरे है वो अभी तक सॉर्टेड ही है। sure तो इसलिए फिर हमको ना एक और वो करना पड़ा, हाँ, एक और यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ा ताकि ये वैल्यू 24 हो जाए
और 24 सॉरी 26 हो जाए और ये वैल्यू 24 हो जाए, तब जाके ये लोग अनसॉर्टेड बनेंगे, इसलिए हमने +1 कर दिया। और सिमिलरली अगर डिफरेंस इवन ऑड भी होता ना तब भी सेम चीज़ ही होती। जैसे अगर मान लो 7 होता, 7 के बाद 5 बनता, 5 के बाद 3 देन 1। अब यहाँ पे देखो ये 7/2 ऑपरेशन हो गए हैं, यस 3 ऑपरेशन, 1 2 3, राइट। और फिर अगर अभी तक डिफरेंस 1 ही है, इसलिए फिर हमको इक्वल करना पड़ेगा ताकि -1 हो जाए। ओके, ताकि इसलिए फिर हमने डिफरेंस बाय 2 करा है और फिर +1 भी किया है। Let's check the code whether it is correct or not. Hopefully accepted. तो मैं कोड भी शेयर कर देता हूँ अपने उस पर। Solution for POTD 48। और किसी को कुछ भी डाउट? वो इसमें काफी थोड़े लोग से आए हैं। इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं क्या, मतलब बिना एरे लिए भी आई गेस। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक बिना एरे के भी हो जाएगा, लाइक सिंपल है, जस्ट एक अगर वेरिएबल भी लोगे ना, उसके लिए फिर तुमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा प्रीवियस करके, ताकि तुम प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर पाओ। तुम करंट वैल्यू फिर इनपुट लेना और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेना, तो विदाउट एरे भी कर सकते हो। और मुझे कुछ एक्चुअली कोड से रिलेटेड डाउट नहीं था, लेकिन इंटीजर डिवीजन कैसे होता है, मतलब नेगेटिव इंटीजर डिवीजन कैसे होता है उसमें डाउट था थोड़ा। नेगेटिव इंटीजर डिवीजन, इट्स लाइक अगर नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू, हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। मतलब जो पॉजिटिव में होता है बस उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे। जो पॉजिटिव में होता है उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, हाँ करेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। बस मॉड्यूलो में ये चीज़ मत करना, मॉड्यूलो में थोड़ा दिक्कत होता है, मॉड्यूलो में डिफरेंस होता है। कि ओके। मॉड्यूलो का एक बार चेक कर लेना, मेरे को भी श्योरली याद नहीं है कि उसमें भी अलग अलग रहता है। इट्स लाइक नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आएगा, इसमें हम्म। बाकी डिवीजन में तो सिंपल है, से मल्टीप्लिकेशन में होता है ना वैसे ही। ओके। ये और किसी को कुछ डाउट? ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। अभिषेक, थैंक यू। बैरी, अप्पू, Harsh, Rabai, Jasmine, Leo, Nino, Rachit, Scarfish, Rodriguez, Said, Suman, Tatwa, Captain. Thank you. हम लोगों के लिए टास्क दूं, इसको सेम ना इस पे करके देख लो बिना एरे के। तरह से कुछ तो सीखोगे इन प्रॉब्लम से। अगर बिना एरे के भी कर लिया तो प्रीवियस एंड करंट लेके आई गेस एक बार ना सिब्रे ने दिखाया था कि कैसे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को। अगर तुम नोटिस करोगे ना तो ये सिर्फ करंट एंड प्रीवियस एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। कर लोगे? ऐसे ही तो ऑप्टिमाइजेशन शिफ्ट हो गए। हाँ, पहले ही नॉर्मली करना अगर नहीं किया था। चलो भाई, आज ऐसे ही आ गया देखने, मुझे जीजी के पसंद है भाई।
How many?
a simple
हो सकता है भाई, हो सकता है। सही बात।
to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे. ये लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट. Read this. This is also from the exercise of textbook. टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है. Read the problem carefully. Conceptual question है, so you have to think and tell me the answer. Now let's read the question. Consider a system using preemptive priority based scheduling with point is dynamically changing priorities dynamically change होंगे. On its arrival a process is assigned a priority of 0. Arrival पर process की priority क्या है? 0 है. And running process priority increases at the rate beta. Running process की priority beta rate से increase हो रही है. And priority of the process in the ready queue increases at the rate of alpha. Ready queue की priority alpha. By dynamically changing the values of alpha beta, अगर alpha beta की values आप change करो, one can achieve different scheduling disciplines, different scheduling approaches among the processes. तो अगर हम ये discipline follow करेंगे, ये condition follow करेंगे, तो what kind of what discipline will be followed? Means what type of scheduling will be followed among processes when beta is greater than alpha and alpha is greater than 0. Any idea? Answer for first come first serve. ठीक है. So let's understand the question diagrammatically. ये ready queue है, ये CPU है. So this is ready queue, this CPU. And here I have some processes PX, PY, PZ, etc. And here some process PR is running as per the note. Running process, as per the running process, its priority is increasing at the rate of beta. और जो processes ready queue में है उसकी priority increase हो रही है at the rate of alpha. और जो new process आएगा ready queue में, new process, इसकी priority है 0. Given as per the question. So he say if I follow the condition that beta is greater than alpha and both are greater than 0, मतलब what kind of discipline will be new process, इसकी priority है 0.
given as per the question. So he say if I follow the condition that beta is greater than alpha and both are greater than 0, मतलब what kind of discipline will be followed among the processes, मतलब processes कैसे शेड्यूल होंगे सीपीयू पर, वो कौन से डिसिप्लिन में शेड्यूल होंगे सीपीयू पर, बोलिएगा. सुनिए, जो भी प्रोसेस शेड्यूल होगा सीपीयू पर, पहले जो शेड्यूल होगा, इट विल नेवर गेट प्रीएम्प्टेड बाय एनी रेडी प्रोसेस. क्यों? क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. रेडी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी हमेशा बढ़ के होगी रेडी प्रोसेस. नो रेडी प्रोसेस कैन प्रीएम्प्ट रनिंग प्रोसेस फॉर बीटा ग्रेटर देन अल्फा, एंड नो न्यू प्रोसेस कैन आल्सो प्रीएम्प्ट द रनिंग प्रोसेस. क्यों? क्योंकि न्यू प्रोसेस की प्रायोरिटी 0 है एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0. तो मतलब जो प्रोसेस पहले शेड्यूल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. It won't get preempted by any ready or any new process. So it will work like what? Naturally, this will work like FCFS. First come first serve के डिसिप्लिन में वर्क करेगा ये कंडीशन. हालांकि डायनामिकली प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, लेकिन इट विल वर्क लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. उसी तरह सेकंड कंडीशन, लुक एट दिस बॉयज एंड गर्ल्स. अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 0. यहां पे देखिएगा. अब आप सोच के बताइएगा what will be the discipline here. Alpha is less than beta. अब यहां पर भी देखिएगा beta is greater than alpha, beta is greater than alpha. मतलब रेडी प्रोसेस ने कभी भी रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करना है, नहीं करेगा, बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. लेकिन बोथ आर लेस देन 0. मतलब अगर कोई नया प्रोसेस आएगा तो तुरंत ही रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करेगा. जो भी प्रोसेस लास्ट में आएगा विल इमीडिएटली रन फर्स्ट. जो भी प्रोसेस फिर आएगा इमीडिएटली, जैसे ही कोई नया प्रोसेस आए इट विल प्रीएम्प्ट एंड रन ऑन सीपीयू. मतलब दिस विल वर्क लाइक व्हाट? जो भी प्रोसेस लास्ट में आएगा रन होगा पहले, सबसे पहले. मतलब लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑपोजिट ऑफ दिस, लास्ट कम फर्स्ट सर्व. So like this questions theoretically, logically can be asked. चलिए और एक रीजनिंग क्वेश्चन लेंगे बिफोर वी कम टू न्यूमेरिकल. लुक एट दिस. रीड दिस क्वेश्चन. दिस इज आल्सो एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक का. रीड इट, मेक एन इंटरप्रिटेशन. राउंड रॉबिन के क्वेश्चन है. तो टाइम क्वांटम इज इक्वल टू क्यू एंड सीपीयू शेड्यूलिंग ओवरहेड इज डेल्टा एस. ईच प्रोसेस रन्स ऑन एन एवरेज फॉर t seconds. मतलब you can say average burst time of the process is t before blocking on IO. Average burst time that it runs on CPU before blocking for IO is t. Give a formula for CPU efficiency for each of the following conditions. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है. ये क्वेश्चन, चलिए आंसर बताइएगा पहले, देखेंगे. Each process runs on an average for t seconds or t units, t seconds before blocking for IO.
मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. राशिद इज सेइंग ऑप्शन 3. क्वेश्चन ये है कि क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? इज इट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है. दिस इज नॉट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मतलब हर एक ऑप्शन के लिए दीज आर ऑप्शंस. हाँ, हर एक ऑप्शंस के लिए आपने फॉर्मूला देना है. गिव अ फॉर्मूला फॉर सीपीयू एफिशिएंसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. ये कंडीशंस में फॉर्मूला देना है आप. समझ गए? ठीक है, वेरी गुड. चलिए, इफ Q is infinity, what is the formula? Somebody has written earlier. Okay. सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है एफिशिएंसी का मतलब क्या है. एफिशिएंसी मतलब यूजफुल वर्क बाय टोटल. सर ये टोटल क्या है? टोटल है यूजफुल प्लस ओवरहेड. तो सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन. एफिशिएंसी इज नथिंग बट यूजफुल टाइम बाय टोटल टाइम. टोटल इंक्लूड्स यूजफुल प्लस ओवरहेड. जैसा कि अगर क्लास की एफिशिएंसी की बात पूछो तो 2.5 आवर्स में जो यूजफुल टाइम मेरा क्या है, मतलब जो लेक्चरिंग में गुजरा है, रियल अंडरस्टैंडिंग में गुजरा है, और बाकी का ओवरहेड. ओवरहेड क्या होगा? अगर मैं कुछ जोक्स कट कर रहा हूं या कुछ टाइम के लिए खाली बैठ रहा हूं या टाइम स्पेंड कर रहा हूं, दैट इज ओवरहेड. दैट इज ओवरहेड. ये है फॉर्मूला एफिशिएंसी का. So this is a formula for efficiency. This is a formula for efficiency. अब हम क्या करेंगे? यहां पर गैंट चार्ट बनाएंगे. Look at this. A generalized way of solving the problem. CPU 0, let us say. P1. Time quantum for the first condition is Q is equal to infinity. Time quantum is infinite, very large value. तो मतलब P1 will run for how long? बोलिएगा बच्चों, P1 will run for how long? Come on. P1 will run for how long? Time quantum is infinite. So P1 will run for T. P1 will run. अच्छा, यहाँ ओवरहेड है ना, ओवरहेड मैंने नहीं लिखा. I need to draw overhead. हाँ बिल्कुल. 0, I have delta S. P1 will run for T units, मतलब S plus T. This T units. फिर यहां पर P1 जाएगा IO के लिए. राइट? एंड फिर यहां क्या होगा? फिर अगेन डेल्टा. You will have S duration, and then you will run P2 again. Next process. Each process bar hai, matlab we don't know, we have n processes. So again it will run for T, and this cycle will continue. This cycle will continue. So process delta P1 will run for T units, matlab S plus T. This T units. फिर यहां पर P1 जाएगा IO के लिए. राइट? एंड फिर यहां क्या होगा? फिर अगेन डेल्टा. You will have S duration, and then you will run P2 again. Next process. Each process bar hai, matlab we don't know, we have n processes. So again it will run for T, and this cycle will continue. This cycle will continue. So for a duration of time, duration हम यहाँ पे क्या लेंगे? duration लेंगे एक process की cycle. एक process की cycle अब ये से यहाँ तक है. ये total duration है S plus T. S plus T. ये total duration है. ये total duration में useful time कितना spend किया process T. So therefore efficiency will be, we have n processes. We have S duration.
and then you will run P2 again, next process. Each process varies, matlab we don't know, we have n processes. So again it will run for a t, and this cycle will continue. This cycle will continue. So for a duration of time, duration हम यहाँ पे क्या लेंगे? Duration लेंगे एक process की cycle. एक process की cycle अब ये से यहाँ तक है. ये total duration है s plus t. S plus t. ये total duration है. ये total duration में useful time कितना spend किया process t? So therefore efficiency will be t by s plus t. लेकिन आप बोलोगे सर ये तो एक ही प्रोसेस के लिए है. हाँ बिल्कुल, आप जब एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे प्रोसेस के लिए करो. तो मान लीजिए यू हैव n प्रोसेसेस. इस तरीके से अगर आप पूरा n प्रोसेसेस के लिए करोगे तो इनटू n बोलोगे, दिस आल्सो इनटू n, तो n कैंसिल हो जाएगा. तो ओवरऑल क्या बचेगा आंसर? t by s plus t. वेरी सिंपल. ठीक है ना? Calculating efficiency for n processes is same as calculating efficiency for one process over a period of time. That's it. The answer for first question is t by s plus t. Orally आप बोल सकते हो what will be the answer for the second condition. ठीक है ना? Calculating efficiency for n processes is same as calculating efficiency for one process over a period of time. That's it. The answer for first question is t by s plus t. Orally आप बोल सकते हो what will be the answer for the second condition. q is greater than t. बोलिए. same रहेगा ना? q is greater than t. तो t by s plus t. थर्ड कंडीशन के लिए बोलिए बच्चों. q is less than t. Akshat is saying t by t plus n. Why? No. You are not following the concept. Same plus t. Orally आप बोल सकते हो what will be the answer for the second condition. q is greater than t. बोलिए. same रहेगा ना? q is greater than t. तो t by s plus t. थर्ड कंडीशन के लिए बोलिए बच्चों. q is less than t. Akshat is saying t by t plus n. Why? No. You are not following the concept. What will be the answer for third question? Come on. Yes, Aryan is correct. Now the process will not run for t. Look at this. I'm drawing the Gantt chart. Now the process will run for 0 delta s p p1 q. Then delta p2. Now the process will not run for t. Look at this. I'm drawing the Gantt chart. Now the process will run for 0 delta s p p1 q. Then delta p2 s q. ऐसे साइकिल चलेगी. तो यहां पर आपका साइकिल टाइम ये है. तो इसके लिए एफिशिएंसी क्या बनेगी? q by q plus s. That's it. q by q plus s. ठीक है ना? सो फोर्थ कंडीशन के लिए बताइएगा. q is equal to s. लॉजिकली ओरली बोल सकते हो. टाइम क्वांटम और ओवरहेड दोनों सेम होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी? हाफ 50%. Right? Then what about q equal to 0? क्या बनेगी? q by q plus s. That's it. q by q plus s. ठीक है ना? सो फोर्थ कंडीशन के लिए बताइएगा. q is equal to s. लॉजिकली ओरली बोल सकते हो आप.
ओरली बोल सकते हो। टाइम क्वांटम और ओवरहेड दोनों सेम होंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी? हाफ, 50%, 50%, right? Then what about Q equal to 0? What about Q equal to 0? नेचुरली यहां पे देखिए, अगर आप टाइम क्वांटम को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट ये तो ओवरहेड तो 0 नहीं होगा, सो देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय x विल बी 0। नेचुरली हमने पढ़ा भी, व्हेन एफिशिएंसी रीचेस टू 0, सॉरी, टाइम क्वांटम बिकम 0, efficiency drops to 0. Already we have derived that, and that is what is being proved here. So 0%. Those who are saying P1 ने complete नहीं किया, बच्चों आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा, those students are saying but sir process तो complete नहीं हुआ, so that means I can say only one thing: you have not understood the question. क्वेश्चन का essence समझना है, that is very important. Are we given any number of processes here? Point number 1, no. Are we given each process life cycle will continue how much? We don't know. So you have to make a generalized derivation. Please understand concept of the question. Is it given when will process complete? It is only given that each process runs on an average t seconds on CPU before blocking for IO. That's it. अब कितने बार रन करेगा t units के लिए, कितने बार IO के लिए जाएगा, let it go any number of times. Let it go any number of times. Why should we wait for it to complete? हमें एक जनरल एफिशिएंसी देखिए, अल्टीमेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आके कैंसिल होगा ना, n नंबर ऑफ टाइम्स रन हो रहा है, n प्रोसेसेस कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो यू हैव टू कंप्यूट, मैं पहले ही बताया, मैं यू हैव टू कंप्यूट ओनली t। कंप्यूटिंग फॉर n is as good as computing for one cycle, because efficiency is numerator by denominator. यहां पे आप n टाइम से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी n टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब जरा सिंपल क्वेश्चन है, PYQ, आंसर दीजिएगा। दिस डायरेक्ट वन बहुत सिंपल है। आई एम श्योर एवरीबडी विल वर्क आउट एंड गिव मी द आंसर।
achievable, look at this. The minimum achievable average waiting time for these processes in a non-preemptive scheduler rounded to nearest integer is dash millisecond. Numerical answer type. देखिए कोई शेड्यूलिंग टेक्निक का मेंशन नहीं किया गया है. Nothing is given about the scheduling technique. Nothing is given about the scheduling technique. सिर्फ इतना बताया गया है कि मिनिमम अचीवेबल एवरेज वेटिंग टाइम आना है, मिनिमम वेटिंग टाइम आना है. मतलब कौन सा शेड्यूलिंग टेक्निक अमंग ऑल विल गिव यू द मिनिमम वेटिंग टाइम? एसजेएफ प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव? बोलिए, एसजेएफ प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव? इस प्रॉब्लम के लिए दोनों भी इक्वल है. फॉर दिस प्रॉब्लम बोथ आर सेम. For this problem, both are same. Why? Arrival time is 0. Both will be same. So let us apply. SJF for these three data sets, for these three instances, 0. So who will run first? P3, 10. उसके बाद P1, 26. उसके बाद P2, 20, 46. That's it. Kitna hai answer? How much will be the answer, please? I'm not calculating. What is average waiting time for this data set? 12. Very good. So that's the answer. चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है. देखेंगे कितने बच्चे सही बताएंगे आंसर. Tell me the answer for this question. Very good. So that's the answer. चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है. देखेंगे कितने बच्चे सही बताएंगे आंसर. Tell me the answer for this question.
The sequence dash PYQ है is an optimal non-preemptive scheduling sequence for the following jobs, which leaves the CPU idle for dash units of time. Options are there, A, B, C, D. You have to select the correct answer. Come on, do it. I'll give you a minute of time. What is the answer for this? Among the options A, B, C, D. Okay. Listen here. Which scheduling technique will you apply? Let me answer. Let me ask. कौन सी शेड्यूलिंग टेक्निक आप यहां पर अप्लाई करोगे? क्या आप एसडीएफ अप्लाई करोगे?
SRTF करोगे, boys and girls, the beauty of this question is that you don't have to apply any of the algorithm जो हमने पढ़ा है. This question is not to be solved by applying any scheduling technique. You don't have to apply any scheduling technique. बगैर शेड्यूलिंग टेक्निक अप्लाई किए के बेस्ड ऑन ऑप्शंस यू हैव टू वर्क आउट. बेस्ड ऑन ऑप्शंस यू हैव टू वर्क आउट. सुनिएगा, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, किस ऑर्डर में, 3 2 1 ये सीक्वेंस है. इज एन ऑप्टिमल, हाँ इतना कहा गया है कि नॉन प्रीएम्प्टिव ऑप्टिमल शेड्यूलिंग है वो फॉर द फॉलोइंग जॉब. विच सेकंड पॉइंट ये है कि इन दिस शेड्यूलिंग टेक्निक देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन है, वी कैन लीव द सीपीयू आइडल फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए आप सीपीयू को आइडल चाहे तो रख सकते हो टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑर्डर. एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग सीक्वेंस क्यू आने के लिए, एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग सीक्वेंस के लिए आप अगर चाहो तो प्रोसेसर को आइडल रख सकते हो. ऐसा प्रोविजन हमने कोई शेड्यूलिंग टेक्निक में नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन. ये डिस्टिंक्ट क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोना अप्लाई एनी शेड्यूलिंग टेक्निक. अब सुनिएगा, ऑप्शन 1A 3 2 1 1, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये ऑप्शन पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है. हम ऑप्टिमल की बात बाद में करेंगे, पहले पॉसिबल की बात करेंगे. इज दिस ऑप्शन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, सिर्फ इतना बता दो आप. ये शेड्यूल विथ आइडल यूनिट ऑफ 1, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. नेताली, अभिषेक, कम ऑन, ये शेड्यूल ऑप्शन ए, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. क्या कह रहा है ऑप्शन? फर्स्ट यू आर गोना स्टार्ट विथ प्रोसेस 3 फर्स्ट, उसके बाद P2 को रन करोगे आप, उसके बाद P1 को रन करोगे. आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम इज 1. तो इज इट पॉसिबल और नॉट? गैंट चार्ट बनाइएगा, यहां पर हम कोशिश करेंगे गैंट चार्ट बनाने की. So as per this option, सुनिएगा, सीपीयू इफ एट ऑल अगर आप P3 से स्टार्ट करना है फर्स्ट प्रोसेस को, अगर फर्स्ट प्रोसेस P3 से स्टार्ट करना है तो मतलब ये हुआ कि मिनिमम आपने आइडल टाइम होना है कितना, कितना मिनिमम आइडल टाइम होना चाहिए? 1. यू कीप योर प्रोसेसर इंटेंशनली आइडल, intentionally purposefully idle, and then you start with P3 as per the option. I'm doing as per the option. P3 non preemptive schedule है तो it will complete at time 2. उसके बाद आप रन करोगे P2 को taking 5 units 7, उसके बाद रन करोगे P1 को 7 + 9 16. ये है शेड्यूल. इज दिस पॉसिबल और नॉट? हाँ सर ये पॉसिबल है. ठीक है, इसे रख लीजिए. ऑप्शन बी पे आइए. Tell me clearly, is option B possible or not possible? I'm just asking, possible या not possible? Not possible. Not possible. क्यों? If you want to start with process 2 first, अगर आप process 2 से पहले start करना है तो minimum idle time 0.6 होना है, लेकिन ऑप्शन में बताया गया है 0. तो ये this is impossible. उसी तरह ऑप्शन सी भी बताइएगा, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? बोलिए, नॉट पॉसिबल. अब लास्ट है इंटरेस्टिंग, ऑप्शन डी. सुनिएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कम ऑन, ऑप्शन डी, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के लिखिएगा. Option D, is it possible or not possible? Many people are saying possible, many are saying not possible. Neil is saying no. Neena is saying possible. Shivam is saying possible. Let us draw the Gantt chart as per the data given in option D. Option D का Gantt chart मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा. CPU टाइम 0 पे अवेलेबल है प्रोसेस P1, लेकिन ऑप्शन में ये कहा गया है यू स्टार्ट विद प्रोसेस P1. हाँ, किस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हो आपको पता नहीं, लेकिन यहां पर दिया गया है कि यू कैन कीप योर प्रोसेसर आइडल फॉर 5 यूनिट्स. तो ये 5 यूनिट्स आप कहीं पर भी आइडल रख सकते हो.
इनिशियल में ही आइडल रखना जरूरी नहीं है. You can complete P1 and have 5 minutes of idle time. You can complete P1 2 units of idle time, and here we can keep the processor idle during the schedule of P1, P2, P3 at any point of time. कहीं भी idle रख सकते हो आप. तो आप फर्स्ट टाइम में ही आइडल रखो. यहां पर जब 1 यूनिट के लिए आइडल रख सकते हो सीपीयू को, तो व्हाई नॉट आई कैन कीप इट आइडल फॉर 5 यूनिट्स आल्सो. पर्पसफुली रखूंगा मैं आइडल फॉर 5 यूनिट्स. इसके बाद मैं P1 को रन करूंगा फॉर 9 यूनिट्स. 5 + 9 14. देन आई विल रन P2 5 यूनिट्स 19. देन आई विल रन P3 1 यूनिट 20. पॉसिबल, दिस पॉसिबल. रीजन इज, सुनिए, यही है ब्यूटी गेट क्वेश्चन की है. When I can keep my processor, हालांकि जीरो पे एक प्रोसेस अवेलेबल था, लेकिन मैंने पर्पसफुली कीप किया प्रोसेसेस, सीपीयू को आइडल रखा 1 यूनिट के लिए. So question is, when I can keep it idle for 1 unit, who will stop me to keep it idle for 5 units? Nobody will stop. क्योंकि प्रोविजन है क्वेश्चन में, you can keep your processor idle purposefully. समझ में आई बात? Is the point clear? You can keep it idle here or here or here, anywhere. You can keep it idle. हाँ, अब सुनिएगा. What is the schedule length here? Listen to me, boys and girls. What is the schedule length here in the first question? 16. What is the schedule length here in the second question? 20. तो बोलिएगा आप, among these two possible, which is optimal and why? Come on. Which is optimal? A or D? Both are possible. A and D are possible. Among them, which is optimal? Question is for optimal. So why A is optimal? Because it is less idle? No. Why? I agree with you. Option A is the answer for this question. लेकिन आपने बताना है A क्यों? Why A is optimal? That is very important. Why is A optimal? Let me see who will answer this. A optimal क्यों है? ये बोलिए. That is very important. No, CPU idleness is 1/16 less percentage. No. हाँ, प्रसन्नजीत is correct. आप सुनिए, यू आर नॉट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स. पूरा चैप्टर एंडिंग पे है हमारा. ऑप्टिमैलिटी के लिए कंडीशन क्या है बेटा? ऑप्टिमल शेड्यूलिंग के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम. मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये कंडीशन है. तो जाहिर है मिनिमम एवरेज एंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम इससे आएगा, ना कि इससे. क्योंकि शेड्यूल लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा होगा, शेड्यूल लेंथ कम है तो कम होगा. दैट इज द रीजन कि ये ऑप्टिमल है. तो वी आर नॉट अप्लाइंग एसजेएफ और वी आर नॉट अप्लाइंग एसआरटीएफ. इफ आई अप्लाई एसजेएफ फॉर दिस डेटा, देखिएगा, दैट इज इंटरेस्टिंग. अगर मैं एसजेएफ अप्लाई करूं इस डेटा का, तो हाउ विल इट वर्क? टर्न अराउंड इज करेक्ट. आप सुनिए, यू आर नॉट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स. पूरा चैप्टर एंडिंग पे है हमारा. ऑप्टिमैलिटी के लिए कंडीशन क्या है बेटा? ऑप्टिमल शेड्यूलिंग के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम. मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ये कंडीशन है. तो जाहिर है मिनिमम एवरेज एंड टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम इससे आएगा, ना कि इससे. क्योंकि शेड्यूल लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा होगा, शेड्यूल लेंथ कम है तो कम होगा.
दैट इज द रीजन कि ये ऑप्टिमल है. So we are not applying SJF or we are not applying SRTF. If I apply SJF for this data, देखिएगा, that is interesting. अगर मैं SJF apply करूँ इस data का, तो how will it work? If I draw the Gantt chart for this data set using SJF, let us draw SJF. SJF. Come on, let us work out. Time 0, P1, 9 units. Then after that, P3, 1 unit, 10. Then उसके बाद P2 5 units, 15. This will be the Gantt chart using SRTF. Sorry, SJF. Non-preemptive SJF. अब SRTF के लिए बनाइएगा Gantt chart. SRTF for the same data. At time 0, you are going to start with P1. How long? 0.6. 0.6. Then it has remaining time how much? 8.4. Less process, less burst time. So therefore, naturally, P2 will take the charge. And P2 will run for how long? 1 unit. 1. And naturally, it will get preempted at 1. Then P3 will take the charge. Run for 1 unit. 2 पे complete होगा. इसके बाद कौन रन करेगा बोलिएगा? इसके बाद कौन रन करेगा SRTF में? P2 रन करेगा. P2 का remaining time कितना है? What is the remaining time? 4.6. 4.6 ऐड कीजिएगा यहाँ पर. 6.6. फिर इसके बाद कौन रन करेगा? Who will run after this? P1. बैलेंस टाइम कितना है P1 का? हमने क्या कहा था? 8.4. 8.4 ऐड करो आप 15. This is Gantt chart. यहां पर भी एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम दोनों का निकाल लीजिएगा. यहां पर भी आप निकाल के देखिएगा. डेफिनेटली दिस विल बी द लीस्ट. ये जो हम वर्कआउट किए, दिस विल बी द लीस्ट. दिस विल बी द लीस्ट. क्यों? शेड्यूल लेंथ 15 है. लेकिन यहां पर देयर इज नो, इन बोथ द केसेस देयर इज नो आइडल टाइम. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम दोनों में फर्क है. That's why I said we are not applying any scheduling technique. This just said optimal non-preemptive scheduling sequence among the given options. यहाँ पर कोई option SRTF से match नहीं हो रहा है, SJF से match नहीं हो रहा है. I hope you have understood what I am trying to say. This is what is the knowledge required to solve the problems. Understood? Clear है? So you should not get confused. SRTF, SJF is different and this problem is different. Prasanjit, why you are getting confused? In SJF, P1 will start at time 0 and run at time 9 till 9. नॉन प्रीएम्प्टिव. यानी इसके बाद कौन रन करेगा? P3 रन करेगा. ओके, राइट. विल गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. दिस इज आल्सो a PYQ इंटरेस्टिंग वन एंड आई एम वेरी श्योर दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, उसके सिमिलर है. और आप वर्कआउट कर सकते हो. जो रिस्पांस टाइम का क्वेश्चन मैंने वर्कआउट किया था ना, उससे सिमिलर है ये क्वेश्चन. सी दिस, आई वांट एवरीबॉडी टू रीड इट. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए. लेंथी क्वेश्चन है.
Hopefully, we'll start the new chapter today itself. Neil. Three processes A, B, and C each execute a loop of 100 iterations. Loop के 100 iterations है. In each iteration of the loop, a process performs a single computation that requires TC CPU millisecond and then initiates a single IO operation that lasts for. मतलब हर iteration में CPU computation है, IO है, फिर CPU computation, फिर IO, फिर CPU computation, फिर IO, 100 iterations है. It is assumed that the computer where the process execute has sufficient number of IO devices, concurrent IO, and the operating system of the computer assign different IO devices to each process. Scheduling overhead is negligible. The processes have the following characteristic. Computation time, IO time per iteration is given. Computation time per IO, TC and IO is given for per iteration. ABC. Process ABC start at 0, 5 and 10 milliseconds respectively in a pure time sharing system, round robin with time slice of 50 milliseconds. The time in millisecond at which the process C would complete its first IO operation is dash. आराम से कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो. Thousand is correct, हिमांगी. Simply you have to draw the chart. सुनिएगा, बहुत आसानी से कर सकते हो ये प्रॉब्लम. CPU. So initially at time 0 we start with process. क्या नाम है processes के? ABC. Process A कितने टाइम के लिए रन करेगा? 50, क्योंकि टाइम क्वांटम 50 है. तो देखिएगा P
प्रोसेस एक कंप्यूटेशन के रिक्वायरमेंट है 100 बिफोर गोइंग फॉर आईओ 100। फिर उसके बाद कौन रन करेगा, बी रन करेगा अनदर 50 100, फिर सी रन करेगा 150, फिर ए रन करेगा 200, यहां पर ए जाएगा आईओ के लिए, ठीक है ना, कितने 500 मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब उसका आईओ कंप्लीट होगा 700 पर। आदित्य इट इज नॉट 900। फिर उसके बाद यहां बी रन करेगा 250, फिर सी रन करेगा 300, दोनों का रिक्वायरमेंट एक बार देख लीजिएगा 350 एंड 200, 350 एंड 200, ठीक है। फिर बी रन करेगा 350, फिर सी रन करेगा 450, सॉरी 400, फिर अगेन बी, फिर 450। तो देखिए बी हैज रन फॉर 1 2 3 4 200, बी 200 के लिए रन करा और 350 तक जाना है। सी को भी 200 रन होना है, 1 2 3, सी यहां रन करेगा 500, ठीक है। तो देखिएगा सी हैज कंप्लीटेड इट्स कंप्यूटेशनल बस 200 का, सी ने कंप्लीट किया 1 2 3 4 4, मतलब सी आईओ के लिए स्टार्ट कर रहा है टाइम 500 पर। कितना है उसका आईओ टाइम 500, मतलब इसका आईओ कब कंप्लीट होगा, यही क्वेश्चन है ना, 1000 पे कंप्लीट होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दिख रहा है इतना लंबा, लेकिन आंसर इज वेरी सिंपल। आदित्य प्लीज चेक वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। क्लियर है एवरीबडी? कम ऑन टेल मी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन नाउ। एक नया क्वेश्चन है जो मैं अब तक कोई बैच में जनरली सॉल्व, हाँ दूसरे कोई प्रीवियस बैचेस में रैंडमली सॉल्व किया था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व नहीं किया हूं, फर्स्ट टाइम हम सॉल्व कर रहा हूं। दैट आई एम कॉलिंग इट एज इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग। इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग टॉपिक का नाम है, इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग। नेम ऑफ दिस इज इंटीग्रेटेड। I want everybody to pay full attention to understand this question. I want everybody to pay full attention. Integrated scheduling. एक क्वेश्चन मैं वर्कआउट करूंगा, बाकी का होमवर्क आपने करना है, सुनिएगा। इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रायोरिटी विथ राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन जनरली इज नॉन प्रायोरिटी बेस्ड। राउंड रॉबिन इज अ फेयर शेड्यूलिंग, उसमें कोई प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई प्रायोरिटी हाई हो लो हो राउंड रॉबिन कंसिडर नहीं करेगा, सभी को इक्वल ट्रीट करेगा। एवरी प्रोसेस विल बी ट्रीटेड इक्वली, लेकिन हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं विद सर्टेन एस्पेक्ट। क्या है कॉम्बिनेशन दोनों का, सुनिएगा। रीड द स्टेटमेंट। रन द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो भी प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी पहले हो, मतलब सबसे पहले हम फेवर कर रहे हैं प्रायोरिटी को। whichever process is among the processes in the ready queue, whichever process is having the highest priority, that will run the process with highest priority. लेकिन if processes are with the same priority, अगर जो processes available है ready queue में अगर वो same priority के हों, तब हम राउंड रॉबिन लाएंगे, तब हम राउंड रॉबिन यूज करेंगे। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग। बोलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Among the processes present in the ready queue, we are gonna select the process having the highest priority, रन होगा। फिर अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो प्रीएम्प्टिव, क्योंकि प्रीएम्प्टिव है ये। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो इमीडिएटली प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में हो वो इक्वल प्रायोरिटी के हो तो हम राउंड रॉबिन फॉलो करेंगे उसमें। तो बच्चों मैं ये चाहूंगा सबसे पहले ये डेटा सेट, जहां पर सिंपल डेटा सेट ले रहा हूं। अब अराइवल टाइम अगर मान लीजिए, दिस इज जनरली ये कॉन्सेप्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चंस में अगर अराइवल टाइम नहीं दिया गया है प्रोसेसेस का तो हम क्या अज्यूम करेंगे? देयर इज नो अराइवल टाइम गिवन, जीरो अज्यूम करेंगे डायरेक्टली। क्या आप इसका गैंट चार्ट खुद ही से बना सकते हो बिफोर आई शो? बिफोर आई शो कैन यू ड्रॉ द गैंट चार्ट?
higher number is higher priority. और लेट मी चेक क्या कन्वेंशन फॉलो हो रहा है. अच्छा ठीक है, यहां पर हम विल फॉलो दिस कन्वेंशन, विल फॉलो द कन्वेंशन ऑफ प्रायोरिटी पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए. लोअर नंबर इज हाई प्रायोरिटी, ये कन्वेंशन है. लो नंबर इज हाई प्रायोरिटी. यूज दिस कन्वेंशन एंड ड्रॉ द गैंट चार्ट. गैंट चार्ट बनाइए आप. टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 यूनिट्स. पोटेंशियल गेट क्वेश्चन हो सकता है. अब इसके बाद देखिएगा बेटा, दो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है विद प्रायोरिटी लेवल 2. हाउ लॉन्ग विल इट रन, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब वो स्ट्रेट अवे 7 यूनिट्स के लिए रन करेगा. अब इसके बाद देखिएगा बेटा, दो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है विद प्रायोरिटी लेवल 2 एंड 2. तो ये दोनों में हम क्या करेंगे, राउंड रॉबिन फॉलो करेंगे विद टाइम क्वांटम 2. इसका बर्स्ट टाइम 5 है, इसका बर्स्ट टाइम 8 है. तो कैसे रन होगा,
So first I will run P2 because assuming lower process ID, run for 2 units 9, then P3, run for 2 units 11, then again P2, run for 2 units 13, then again P3, run for 2 units 15. कितना टाइम? 5. मतलब P2 5, यहाँ पर P2 कंप्लीट हो जाएगा 16 पर. फिर इसके बाद P3, दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग द रिमेनिंग. तो P3 का कितने टर्न रन हुआ? P3 4 यूनिट्स के लिए रन हुआ और 4 यूनिट्स है P3 का. सो P3 18, P3 20. यहां तक क्लियर है सभी को? तो यस, अब इसके बाद फिर अगेन ये दो प्रोसेसेस है P1 and P5. P1 and P5, they will alternate. So first P1 22, then P2 P5 24, then again P1 25. फिर इसके बाद फिर कौन रन होगा? P5 26. Is it okay? ये है इंटीग्रेटेड शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन विथ प्रायोरिटी. बोलिए, इज इट क्लियर? Are you able to understand? Complexity will arise when I take jumbled or different arrival times. अगर arrival times different हो तब complexity बढ़ेगी इसकी. So I am going to take up that problem now with different arrival times and different levels of priority. Different arrival times and different levels of priority. यही गैंट चार्ट यहाँ पर भी है, सोल्यूशन देखिएगा वही है. 26 आया, यहाँ पर 27 क्यों आया? Anything we made a mistake? P1 till 26, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है. अच्छा P1, हाँ ये 26 है. P1 का बस टाइम 4 है, करेक्ट 26 27. मैं ये 3 ले लिया रॉन्गली बाय मिस्टेक. सो दिस 27, मैं प्रायोरिटी ले लिया बस टाइम की जगह. ठीक है, दैट्स राइट. तो वही है चार्ट. अब बेस्ड ऑन दिस सेम क्वेश्चन you have to work out now. Listen to me. The following processes are being scheduled using a preemptive priority based round robin scheduling. Data set hai. Processes, priority, burst time, arrival time. Each process is assigned a numerical priority with higher number. Now reverse convention. जो पहले का था convention वो reverse हो गया. With a higher number, look at this, higher number indicating a higher priority. तो बच्चों कहना यह है कि आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड करना है, then only you should answer. कोई बात जगह हायर नंबर हायर प्रायोरिटी बोलेगा, बात जगह लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी बोलेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल. द शेड्यूलर विल एग्जीक्यूट द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस. फॉर प्रोसेसेस विद द सेम प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन शेड्यूलर विल बी यूज्ड विद टाइम क्वांटम ऑफ 10 यूनिट्स. If a process is preempted by higher, look at that. If a process is preempted by high priority process, the preempted process is placed at the end of the queue. What is the order of the processes in the Gantt chart? What is the average turnaround time? What is the average waiting time? Come on, draw the Gantt chart. Start. Higher number, higher priority. Time quantum for round robin, time quantum is 10 milliseconds. 10 है, 10 units. Come on, draw the Gantt chart.
अरे मुझे नहीं जानना। का हिस्सा मैं स्टार्ट करके छोड़ूंगा, वहां से आपने कंटिन्यू करना है और मुझे आंसर बताना है नेक्स्ट क्लास में। सुनिएगा बच्चों, एंड वर्क अलॉन्ग विथ मी। कम ऑन आंसर मी। एट टाइम 0 आई हैव P1 एंड P2 इन द क्यू, अराइवल टाइम, बस टाइम रिक्वायरमेंट जो भी हो 15 एंड 20। प्रायोरिटी देखिएगा, यहां पर मार्क कर लेंगे, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी, करेक्ट, एज पर द डेफिनेशन। हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी, लोअर नंबर इज लोअर प्रायोरिटी। एट टाइम 0 कौन से प्रोसेस को हम शेड्यूल करेंगे बोलिएगा? ऑब्वियसली P1। P1 की चूंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो कोई प्रोसेस से प्रीएम्प्ट नहीं होगा, तो सारा का सारा बस टाइम रन कर लेगा 15 यूनिट्स। So P1 is over. Now time has become 15. तो टाइम 15 पर सिर्फ P2 है, is it not? सिर्फ P2 है। Next process is coming at time 20. Next process is coming at time 20. Look at this. तो मतलब हम स्टार्ट करेंगे P2 को, लेकिन P2 कब तक रन करेगा बोलिएगा? कब तक रन करेगा P2? Till 20. Till 20. क्यों? At time 20 P3 joins the ready queue. At time 20 P3, और उसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है देन दिस, ग्रेटर। हाँ, P4 भी आया है, दो प्रोसेसेस हैं, P3 and P4. P3 and P4 with same priority have joined. I'm sorry. P4 का मैं ये से कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। दिस इज बर्स्ट टाइम, दिस इज अराइवल टाइम। हाँ बिल्कुल सही है। So P4 has not come, only P3. This is arrival time. I mean, I'm getting confused between arrival time and burst time. 25 पे आ रहा है, सिर्फ P4 P3 आया है, सिर्फ P3। So remove this। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर? At time 20 P3 has come with a priority level 4, it is higher, so therefore this will be preempted in favor of P3 and P2 will be put back to the ready queue.
So put back to the ready queue. अब ऐसा सिचुएशन है, P3 is running, P2 is here. अब उसके बाद क्या होगा, सुनिएगा, P3 will run till what time? P3 will run till what time? बोलिए, ये दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, यहां पर इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो 25 तक रन करेगा, पहले तो 25 तक रन करेगा। 25 पर P4 हैज एंटर्ड, P4 हैज एंटर्ड, बट इसकी प्रायोरिटी 4 है, सेम प्रायोरिटी है। तो क्या, नाउ क्वेश्चन इज, आर वी गोइंग टू प्रीएम P3 या आर वी गोइंग टू कंटिन्यू P3? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या P3 प्रीएम्प्ट होगा P4 के फेवर में या P3 कंटिन्यू करेगा? प्रीएम्पशन, रिमेंबर विल हैपन ओनली इफ आई रिसीव अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। तो कंटिन्यू होगा। आकाश, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेप स्टार्ट न्यू? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेप स्टार्ट न्यू? P3 will continue. P3 will continue. This is not preemption. P3 will continue till what time? That is important. P3 का burst time है, P3 का burst time है 20, लेकिन P3 कब तक रन करेगा? P4 और P3 दोनों, P2 is over? No, P2 is not over, right? P2 is there. Let it be there in the ready queue. अब बोलिए, till what time? This is interesting. Till what time? P3 will run for a total of 10 units. जब भी priority same होगी तो 10 units से बढ़कर रन नहीं कर पाएगा, मतलब 30. Earlier it ran 5, now another 5, 30. अब यहाँ पे round robin apply हो जाएगा सीधा. Utilizing the previous time also. इतने already 10 units, यहाँ से 10 units नहीं करेंगे हम, यहाँ से नहीं, previous also will be accounted. तो यहाँ से, तो मतलब now I will preempt P3 and give the chance to P4 round robin. P4 का भी burst time 20 units है. This will run till 40. This will run till 40. Then 40 पे क्या होगा? P4 जाएगा और रन होगा, चांस मिलेगा P3 को। यहाँ इंटरेस्टिंग है, P3 will run till what time? P3 will run till what time? Interesting. 45. Very good. 45. Why? At time 45, P5 comes with priority of 5. P5 comes with priority of 5. And P5 is having higher priority, मतलब preempt हो जाएगा in favor of P5. In favor of P5. Who? P3. तो P3 यहाँ पे आ जाएगा फिर। तो अब रेडी क्यू में P2 है, P4 है, P5 है, remember. Sorry, P3 है. Now P5 will run till what time, boys and girls? P5 will run till what time? इसका burst time सिर्फ 5 यूनिट है, 50 पे कंप्लीट हो जाएगा. P5 is over. Now at time 50, this fellow has not yet come 55 पर, मतलब देखिएगा P2 है, P4 है, P3. P4 और P3 की प्रायोरिटी सेम है, P4 और P3 की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है? एंड P2 इज हैविंग लेसर प्रायोरिटी, मतलब P2 तो कंटेंशन में नहीं आएगा, दोनों कंटेंट करेंगे। फ्रंट पे P4 है, बैक पे P3 है, तो कौन रन करेगा? P4 रन करेगा। P4 का टोटल बर्स्ट टाइम कितना है? टोटल बर्स्ट टाइम है 20, P4 ने रन किया सिर्फ 10 यूनिट्स, सो इट विल रन टिल 55. It will run till 55. Hope you are understanding. ठीक है? At time 55, I receive process P6 with priority of 5, higher than P4 and P3, So naturally, कौन run करेगा? P6 run करेगा, and I will preempt P4 and put it back to the queue. P6 being highest priority, total burst time 15 units run करेगा. P6 complete करेगा कब? बोलिएगा, what is the completion time of P6? 15 units. 70 पर P6 complete हो चुका. 70 पर P6 complete हो चुका. अब जो processes बचे हैं, P3 है, P4 है, then P2. फ्रंट में P3 है. So P3 will take the charge. P3 का कितना रिक्वायरमेंट है देखिएगा, 25 to 35 यूनिट्स, और यहाँ पर 5 यूनिट्स, राइट? P3 यहाँ पर 20 to 25 5 यूनिट्स, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 5 यूनिट्स, so मतलब 10 plus 15 यूनिट्स P3 has run so far. 15 यूनिट्स, बचा है 5 यूनिट, मतलब P3 will complete 75.
Abhishek, you are selling, but P3 run till 35. कहाँ 35 है P3? 35 कहाँ से आएगा? 75 है. 75. So P3 is over. बचा P4. P4 का कितना रिक्वायरमेंट है? P4 ने यहाँ पर 10 यूनिट्स रन किया, यहाँ पर 5 यूनिट्स रन किया, उसके 5 यूनिट बाकी है. 5 यूनिट बाकी है ना, 80 पे कंप्लीट होगा P4. P4 के 5 यूनिट्स है, सही है. 10 plus 5 15 and now another 5 20. Shivam, you didn't get my point. You are following your own mechanism. The basic objective of round robin is to improve interactiveness. So with that intention, we have to follow this paradigm, not yours. Then finally, who is pending? P2 is pending. P2 has run earlier for 5 units. Balance is 15 units. Balance is 15 units. So therefore, 95. This is the Gantt chart. So time quantum of P3 will start from here itself, not starting from here, Shivam. Because I want to improve the interactiveness between P3 and P4. Hope you follow my point. So this is another question on similar lines and giving this as a homework to you. Similar question. The following processes are being scheduled using a preemptive round robin scheduling algorithm. Preemptive round robin. तो यहां पर भी देखिएगा priority है, burst time, arrival time. Preemptive, priority and round robin. Right? Each process is assigned a numerical priority with higher number, higher priority. In addition to the processes, though थोड़ा सा different यहाँ देखिएगा. In addition to the processes listed below, the system also has an idle task, idle process, which consume no CPU resources, and it is identified as p-idle. This task has priority of 0 and is scheduled whenever the system has no other available processes to run. The length of time quantum is 10 units. If a process is preempted by a higher priority process, it is placed at the end of the queue. Gantt chart, turnaround time, waiting time, CPU utilization rate determine करना है. Similar question, as a matter of practice, do this as homework and you can do the practice. ठीक है ना? You can do it in the same way as we did the previous problem. Abhishek, P3 is a higher priority, it's not round robin. कहाँ पर बेटा? P3 is higher priority कहाँ पर है? P3 और P4 की priority same है तो round robin use होगा. ठीक है? So P3 is higher priority than whom? Abhishek, P3 is higher priority than whom? Okay. So will you solve this question, boys and girls? Will you practice this, solve this? Okay, solve this question as a matter of practice and do it compulsory. And I'm giving one more question. I'm giving one more question. Please look here. A variation of round robin scheduler is a regressive round robin scheduler. एक वेरिएशन कर रहे हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जिसका नाम दे रहे हैं रिग्रेसिव राउंड रॉबिन, लाइक मशीन लर्निंग. This scheduler assigns each process a time quantum and a priority. Again, like earlier question, assigns a time quantum and a priority. The initial value of time quantum is 50 milliseconds. However, every time a process has been allocated a CPU and uses its entire time quantum, that means does not block for IO, 10 milliseconds is added to its time quantum.
अगर सीपीयू पे रन हुआ प्रोसेस 50 मिली सेकेंड्स के लिए 10 मिली सेकेंड्स हम उसका टाइम क्वांटम इंक्रीज करेंगे, right? And its priority level is boosted. Time quantum for a process can be increased to a maximum of 100 milliseconds. अब आप increase कर सकते हो when a process blocks before using its entire time quantum. अगर पूरा time quantum process consume नहीं कर रहा है, its time quantum is reduced by 5 milliseconds. तो 5 milliseconds reduce होगा, but its priority remains the same. What type of process, CPU bound or IO bound, does the regressive round robin scheduler favor? This is not NAT. This is not numerical question. ठीक है ना? This is not a numerical question. This is a reasoning question. आपको reason out करके बताना है. This modified regressive round robin scheduler, will it favor CPU bound process or will it favor IO bound process? सोच समझ के एक sample data लेकर workout कीजिएगा and then you come out with a conclusion again and let me know what is the answer for this. Will it favor shorter job? Will it favor CPU bound or will it favor IO bound? You are not getting my point, Shivam. It's an algorithm which will basically take into consideration with a dynamic approach, saying that the moment a same priority process comes, when some process is all, listen to me carefully, Shivam and Abhishek, listen to me. When I have already started running some process, okay, and then a new process enter with the same priority as the running process, then the algorithm will modify saying that whatever time earlier process has computed, has already done the computation, that will be amounted into time quantum. That's it. The remaining time for which that process will be run for will be time quantum minus the amount of time it has run, unless and until already it has exceeded beyond the time quantum. अगर वो already exceed होगा time quantum से तो फिर preempt हो जाएगा. But if it has not got completed its full time quantum, then it will run for the balance amount of time, time quantum minus the burst time. Why is this done? To give the favor to the new process and improve its interactiveness. क्योंकि जैसे ही round robin की philosophy start होगी, our main objective is always to improve the interactiveness, give the favor to the new process as early as possible. That is the concept. Hope the point is clear. Yes, nothing like to going back to ready. I mean, these are all the algorithms which can be incorporated in operating system. You don't have to worry about context switching. You don't have to worry about context switching is always applicable between user process. Actually, context switching happens between operating system and the user process. We are not considering that. User process context switching, we are bothered. We are bothered about user process context switching. So boys and girls, this completes fully the CPU scheduling chapter. CPU scheduling chapter. So I have solved all the typical questions based on CPU scheduling so far. Typical questions, variety of problems, exercise questions, TIFR questions. So I have laid enough foundation for you to build up your building. कितने फ्लोर की बिल्डिंग आपको बनाना है, that is up to you. मेरा जो काम था एक फाउंडेशन ले करना था, necessary concepts and typical questions से आपको orient करना था. So I have laid a very strong foundation for you to build up your building with as many number of floors as you want. ऐसा कोई अब नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है ना? सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड है मैंने डिस्कस किया. अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. अब ना सही टेलीग्राम पे पूछिएगा, कभी भी हो पूछिएगा. डोंट पुट पाइल अप योर डाउट इन द माइंड, डोंट कीप अप द डाउट्स इन द माइंड, हैव एक्सट्रीम क्लैरिटी. अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज फॉलो मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. As soon as this we have completed introduction and background, we have completed process concepts, we have completed system calls, including fork. Then now I have completed CPU scheduling. So nearly I can say 1, 2, 3, 4 chapters we completed. So of all these topics so far discussed, if you want you can start, PYQs leftover. कुछ leftover PYQs है, simple questions है, आप उसे solve कर सकते हो. लेकिन जब आप solve करोगे तो imagine as if you are working in the GATE exam, casually लेटे हुए हैं, solve the question read कर रहे हैं, हाँ मैं समझ गया, solve कर सकता हूँ, बाद में हम देखेंगे. नहीं, या फिर बाद बच्चे देखते हैं ठीक है मैं solve कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बस उतना ही understand करेंगे लेकिन वर्कआउट नहीं करेंगे. ऐसा नहीं चलेगा गेट के लिए.
आपने टेबल पे बैठना है सिंसियरली सीरियसली, टाइमर लगाना है, टाइमर के बेसिस पर वर्कआउट करना है। जैसे आप गेट एग्जाम में वर्क करोगे वैसे ही वर्क करना है, तभी आपका प्रिपरेशन जस्टिफाई होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं आप पीवाईक्यूज अभी भी नहीं ले सकते, मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि यू स्टार्ट पीवाईक्यूज ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, माय ओपिनियन। लेकिन इससे पहले बिफोर पीवाईक्यूज आई वांट एवरीबॉडी टू कंप्लीट नोट्स प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, नोट्स प्रिपरेशन बोथ लॉन्ग प्लस शॉर्ट, ये जरूरी है। नोट्स कंप्लीट करके एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, फिर पीवाईक्यू स्टार्ट कीजिएगा। डोंट स्टार्ट टेस्ट सीरीज, मैं आपको जता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, डोंट टेक अप एनी टेस्ट सीरीज नाउ, वरना आप बाद में मुश्किल में पड़ जाओगे। नेवर टेक टेस्ट सीरीज, सिर्फ पीवाईक्यूज ओनली अप टू दिस पॉइंट। लॉन्ग नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज करने के बाद आप पीवाईक्यू स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप पोस्टपोन करना चाहते हो पोस्टपोन कर सकते हो, देयर इज नो इशू। आफ्टर कंप्लीटिंग वन मोर चैप्टर और कपल ऑफ चैप्टर्स, सारा का सारा प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट, एंड आई वुड रिकमेंड यू कैन स्टार्ट, आई वुड रिकमेंड। ठीक है, आई एम श्योर यू आर मेकिंग द नोट्स, नोट प्रिपरेशन विल बी टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज पूरा पाइल अप करके आखिरी में बनाने जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इंक्रीमेंटल चैप्टर जैसे जैसे एंड हो रहे हो, नोट्स भी अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल, जब का बनाओगे, हाँ जब का साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लीजिएगा तब तक, डोंट पाइल अप, अदरवाइज यू विल गेट टेंशन में आ जाओगे आप बाद में। ठीक है ना, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स या प्रोसेस मैनेजमेंट के पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है, और एक सिंपल चैप्टर है, थियोरेटिकल है, थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। जनरली आई यूज्ड टू टीच दिस लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आई एम अगेन कंपेल्ड टू स्टार्ट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम क्वेश्चंस विल बी मेंशन्ड विद द वर्ड थ्रेड्स, तो हम इसलिए थ्रेड्स पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट होगा। ये हार्डली दिस विल टेक 2 to 3 आवर्स टू कंप्लीट थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग हार्डली मे टेक 2 to 3 आवर्स, छोटा टॉपिक है। एक्चुअली आई थॉट मे बी एटलीस्ट हाफ एन आवर, मैं लेके आया था स्लाइड्स, सो आई थॉट आई वुड कंप्लीट सम पार्ट ऑफ इट, बट एनीवे नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे, राइट, अलॉन्ग विद नेसेसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, I have enrolled in the course Saugata. Should I do live classes or should I watch all the previous classes first and then Saugata, if you अगर आपने पहले ही operating system course attend किया हो, if you already attended the course of operating system, or if you feel that you have you are strong in operating system, then you can attend and then continue watching videos, previous recorded videos. You can attend and watch both, like preemptive based multi-programmed operating system. नहीं, if you are not confident enough, then watch the previous videos as early as possible and then jump into live classes. Any resources to practice questions apart from PYQ? There is no resources, कोई practice question की नहीं है। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही कीजिएगा, आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर गिर जाओगे। PYQ बोल रहा हूँ, PYQ कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज की बात मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं। वही कह रहा हूँ आर्यन, डोंट डू गैल, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से करना है, क्या करना है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए। आई एम सेइंग प्रिपेयर नोट्स, सॉल्व PYQ, इससे बढ़ के और कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज यू विल फॉल इनटू ट्रबल। आई एम टेलिंग यू, डोंट डू इट, हैव सम पेशेंस, हैव सम बिलीफ ऑन मी। मैं जो बोल रहा हूँ सीक्वेंशियल इंक्रीमेंटल स्टेप्स में आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। कब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना है, कब टेस्ट सीरीज लेना है, मैं आपको बोलूंगा। अभी आप सब पूरा खा जाओगे तो फिर इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टिल आई एम सेइंग, हाँ क्वेश्चंस यू शुड ऐड इन द नोट्स, नील, प्रॉब्लम्स यू शुड ऐड, व्हाटएवर प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग बेस्ड ऑन द चैप्टर, यू शुड ऐड इन योर नोट्स, डोंट मेक इट सेपरेट। नोट्स विल बी इंक्लूडिंग थियरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मुलेस, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम क्लास में करेंगे वो रहेंगे। ओके, before we close for the session, if you still have any question, any doubt in the topics listed out, you tell me, or any topic which you feel still you are not confident enough, you tell me, so that maybe later point of time अगर कुछ टाइम मिला तो हम quick revision करेंगे वो टॉपिक का। No guarantee, but still I would like to see. बस these are all very simple topics. आपने एक बार वीडियो देखना है, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो बाकी के टॉपिक्स आपको आसान लगने लगेंगे। There is no issue at all. Okay, very good, very good. If everything is okay till now, excellent, excellent. Continue your good practice. और हो सके तो थोड़ा बहुत आगे के टॉपिक्स पहले से पढ़ के आइए, कुछ ना कुछ पढ़ के आइए, ताकि आपका ग्रिप स्ट्रांग हो, if possible. जरूरी नहीं है, लेकिन if possible आगे के टॉपिक, अब जैसे मैंने कहा थ्रेड्स, ठीक है, जितना हो सके गैलविन की टेक्स्ट बुक में से पढ़ के आइए थ्रेड्स के बारे में। There is nothing wrong, अगर टाइम मिला आपको तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रिप और अंडरस्टैंडिंग काफी स्ट्रांग होगी, अच्छी। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पर क्लोज करेंगे। होप देयर इज नो डाउट, कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, कंटिन्यू योर गुड स्टडीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।